Rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. This session is going to be in English. Basically, our student Abdul Sami is going for his Google Security Engineer Trust and Safety department at Google, right? That's the position, right? Right. So he's going, inshallah, over there. They have at Google, they have their whole practice, trust and safety, security and privacy is a growing team. So they have this whole dedicated team. So we're going to talk about that. The interview is going to be in English. The reason is that Abdul Sami is based in Canada. You're in Cambridge. So Yes. how long have you been here, like in Canada? In Canada, I came in 2012 as a student, and I finished my studies in 2016 and joined one of the company called WatchGuard Technologies as a firewall analyst. Yes. And I worked there almost 6 years, getting 3 or 4 promotions in the same company. And then I moved out from WatchGuard Technologies last year, and now I joined CDW as a cybersecurity analyst. Okay. All right. So that's a good progression. So the interview is going to be, preparation is going to be in English. Abdul Sami is studying blockchain advancement track, which has a lot of combination of various things, cybersecurity, offensive security, digital forensics, threat hunting, and also one of the critical components of blockchain as well. I'm going to set the stage, but this interview is going to be in series. Okay, Abdul Sami. So this is the first part. You have to sit down with me Thursday again for further, because what I'm going to do is I'm going to give you each and every, I'm going to give you a lot of tidbits, right? Okay. And you have to write down these answers, memorize these answers, Sure. right? And you have to say it with the same fluency as I'm saying, with the same confidence, right? Because that is what is going to secure you. Now, at the same time, you also have to make sure that certain labs are completed. There are more than 150 labs in career advancement track. Right. Now, cybersecurity advancement track, offensive security advancement track, digital forensic advancement track, SCADA advancement track, they're all separate. But in the CAT, you get to learn a little bit of everything, right? And what you're learning within the CAT is enough for you to pass this interview. But once you go in there, then you have to keep on learning and all the public blockchain stuff as well, because, and I'm going to mention that we are developing a lot of labs on DevOps side and whatnot, right? Yep. So your next goal is, once you complete this track and once you get into the position, you have to mention to them, and I'm going to set the stage for that as well, that you are working on infrastructure as a code and security as a code. These are the two key things: infrastructure as a code, IAC, and security as a code, SAC, right? So IAC and SAC are the two key concepts that Google completely runs on. Google is not a hardware company. Google is not a software company. It's essentially, it's not like a platform company. It is a software company where their core principle is to code and develop applications, right? Right. An application, all of their services are application. Even the GCP, Google Cloud Platform, everything runs through an application, right? I will be coughing because I have COVID-19. So accept my sincere apologies. No, it's okay. I'm running out of breath. I'm suppressing my cough as much as I can, but then, it might come out, right? So accept my sincere apologies if anyone is there and they're getting bothered by my excessive cough. So one of the things you have to understand is that, as I said, at Google, everyone is a developer. If you're not a developer, like infrastructure guys are developers because they're managing infrastructure as a code. Google doesn't buy anything from Cisco or from Microsoft. They completely rely and develop everything by themselves, right? So they're a completely open source platform. This is what gives them the edge. Now, one of the things you have to mention to them is, and I'm going to set, as I said, this is going to be a very extensive interview. And we're going to go through phases. So this is phase 1. Then we will go through phase 2. Then we will go through phase 3. And then we'll go to phase 4. Phase 1 is all about trust and safety and security and privacy
and I'm going to read this thing from here, as you sent me. It says that trust and safety and privacy is a growing team tasked with ensuring key threats impacting information security, user protection, and trust in Google are anticipated early and managed effectively. What this means is that you have to pay attention to what is written there, right? What they're saying is that this is a growing team. That means then they need more people, because safety is now, cybersecurity is now the bedrock of any company, right? Because they can't run without having effective cybersecurity management principles in place. Again, write down each and every word, right? As I said, cybersecurity is the bedrock for any organization. That is the foundation upon which any organization is nowadays standing upon. And as we all know that, the growing threats, the vectors are increasing day by day. There are different kind of attack vectors. There are state, non-state actors, and there's a lot of things happening on the emerging side as well. So essentially, my role at my existing company, I'm not naming your company right now, right? My role at my existing company is to ensure that it is a managed service provider, and we provide hardware and software services and applications. You can say if it's a QRadar, or if it's a hardware like Cisco, VMware, Firewalls. Firewalls. You name it, we have the equipment for it, right? If you need hardware, infrastructure, software, applications, security applications, managed security services, we provide everything under the sun. That's what we do. This is our bread and butter. However, the team where I work, my role is to make sure that when we get an account, my role is to ensure that I'm presented in front of the client, and my role is to understand the key things that the client requirements are, understand their business requirements, right? Similarly to Google has a lot of solutions. They have their GCP platform, they have their application services, they have their consumer services. There's a lot of things, right? So my role is to understand each and every application and products of the customers, and then try to encapsulate a security layer, wrapped around those services, and also penetrate that security layer within the solution itself, within the applications itself, right? So this is my role at Google, and my job is to ensure that when I go through all of these things, I'm able to understand and I'm able to comprehend all of the key business requirements. Give me 1 minute. Let me write it down because I had to close this from here. Abdul Sami. So I missed your. Okay, found it. Okay, so you can think about if a customer needs vulnerability analysis, my role is to go in and understand the business, the networks, the applications, the asset owners and everything, and then recommend them, where to perform internal vulnerability scans, external vulnerability scans, authenticated scans, right? Web application penetration testing, where, what applications are under the scope, what applications are out of the scope, and then go in and explain it to them, and then go in and then do it for them as well, perform those services, and then provide them the results and help them understand those results as well with meaningful matrices of how they can resolve these issues, right? So write it down, each and everything. I'm writing. You're just explaining about yourself. They're going to ask you, explain, what do you do? Now you're doing all of these things, but you don't know how to explain yourself. Right. No, I'm writing here. So, right? So लिख रहा हूँ जी. तो ये सब चीजें लिखो, write it down, because you're already doing these things, right? But I'm explaining to you how to present it in a way that you can go into Google, right? Working at Google is not a problem. It's easy, but you have to go through multiple rounds. Right? How many rounds are there? 8 rounds. 8 rounds, right? So you have to go through different rounds. There was a time there were only 2 or 3, 4 rounds, but now they have gone through 8 rounds. The technical rounds are, I think, 2 or 3.
The Very remaining wrong, one, sir. just like understanding the psychometric skills, the other skills, and stuff, Leadership, yes. leadership skills and whatnot. You have to set the stage to explain to them where Ji. do you envision yourself if given the opportunity at Google, because at Google, they give importance to people who are visionaries, right? If you have a vision, if you know how to develop that vision and work within the team to make that vision into a reality, they would like to hear from you, because this is a company that keeps on experimenting, right, with new technologies, new services. So it's a very exciting opportunity for you, right? Ji. So I haven't worked with Google, but I have worked with Microsoft and Cisco and Facebook and other companies, but I haven't worked with Google directly, right? But I understand, because many of my students are in there working. So I'm explaining to you how to go through the process, right? So you have to explain yourself. Ji. As mentioned here, trust and safety team members identify and address the biggest problems that challenges the safety and integrity of our products. As I said, they develop products. Google is in the business of developing products, applications, right? Mobile applications, web applications. This is all what they do, right? They use technical know-how, excellent problem-solving skills, user insights, proactive communication to protect users and our partners from abuse across Google products like Search, Maps, Gmail, Play, and Google Ads, right? So these are the 5 key things. Search, everyone uses Google Search. It's the predominant search engine on the face of the planet. Maps, everyone uses Maps as well, right? Pretty much. Now, Apple has their own maps. Other companies are creating their own maps, but Google, their own satellites, so they have a bigger structure. Gmail, half of the planet uses Gmail. If that is not an understatement, I'm not sure what it is, right? Play, this is their store where they sell a lot of applications, AdWords, and stuff like that. Just like App Store for Apple, right? And then Google Ads, again, this is a company that prides itself on advertising, right? But they are also they have also realized that there's a lot of money in other services as well, right? So you have to explain about yourself that my role at the existing company is to understand the customer, understand their partners, and then assess the risk and identify their applications, and then assess the risks around those applications or to those applications, identify the asset owners, understand the perspective of the asset owners, the application owners. All of these people, they play a very critical role in terms of understanding how we should create the encapsulation of the security controls surrounding their products and services, right? So my role at my existing company is not different from the role that I'm coming in here. The only difference is that this is Google we're talking about, right? Google is huge, it's a mammoth company, and the potential to learn and the potential to excel and to grow, I mean, that is what entices me. And I have some very excellent ideas that I would like to participate in, because I'm working in DevOps, I'm working in public blockchain and private blockchain. These are the key areas I'm interested in, because infrastructure, I'm sure Google runs everything as infrastructure as a code, right? Now, one of the key things that if Google really wants to be, and I'm sure like you guys are already working towards that, is that security as a code. How can we embed security as a code within all the key services like Search, Maps, Gmail, Play, Google Ads, YouTube, all the assets, right? All the critical revenue generating assets. How can we secure them? How can we encapsulate them in terms of making sure that all the appropriate cybersecurity governance and compliance controls are built within the applications? They are baked within the applications. That is what entices me. There's a lot of room for growth because we can utilize, data science. We can utilize big data, and I'm a keen learner and a keen participator in terms of learning big data as well. Public blockchain and private blockchain. This is one of the services that we can utilize in terms of making sure that we are authenticating and securing our customers and our data and their data and our data, because their data is our data, right? If it's compromised, it looks bad on us.
how can we do that? There's a lot of things I'm working on. So absolutely, if you ask me, if I have to sum up my whole introduction, what I'm doing here at my existing company, and you can name them, whatever, I'm not naming it, it will be 2.0 on steroids at Google, if given the opportunity. And this is what appeals to me the most, because obviously there's a lot of innovation. There's a lot of things that we can do, and that's what I'm looking forward for, right? So this is your introduction. This is your high-level introduction of how you're going to explain yourself, right? Set the stage right? And then they're going to ask you about, and then you can also add in, so all the key critical controls, web application firewalls, file integrity monitoring, governance, risk and compliance, ISO 27001, and it's all the series of standards for cloud and privacy and security, payment card industry data security standard, DCP and DRP, you name it. I can certainly deliver on all of these aspects. Understand the key technologies, understand what those technologies, how they support the business, understand the business requirements, and then devise these controls which are appropriate to the applications, right? So that is how I see, this is what I do in my present role, and this is what I can bring on the table, along with a lot of innovation from my side, because I continue to learn. And as I said, there are 5 key areas I'm working nowadays. And one of them is, cybersecurity in GRC is the main body, which has all these supplementary technologies. So for example, you can see, imagine that this is Google, right? My palm. My palm is the Google. And I need, organization, or this is an organization, right? This is where cybersecurity and GRC practice comes in, right? This is their scope. What they do is that they have these, they can utilize public, blockchain technologies, public or private, whatever. They can utilize big data. They can utilize, big data and then data science, right? They both come in the same, more or less in the same pillar. Then they have this artificial intelligence to understand the threat vectors, go through different machine learning models, MITRE ATT&CK, and stuff like that, to really understand, perform deep packet inspection, threat hunting, et cetera. So these are the things. Then there is DevOps, where we bake in the security within the solutions itself, whether those solutions are, whatever the solutions are, applications, search, Play, Google AdWords, Gmail, Maps, all the critical solutions, right? And then the last part is basically, have the culture of DevSecOps. So DevOps is one area, and then DevSecOps, right? So essentially, with these 5 key pillars, you can secure an organization. There you go, right? So that makes a full fist, where we can secure the organization in a way that it will continue to be closer to the customers and be secure and compliant as per the local legislations, global legislations, whatever the case is. And one of the things I can tell you is that, compliance is a very expensive exercise, security and compliance, privacy, all these kinds of things. The best thing to do is, and this is something I always recommend to our customers, is to create a unified risk and compliance matrix. A unified risk and compliance matrix. So this one matrix, whether we have applications, whether we have customers in European Union, EU, where we have GDPR, privacy regulations and stuff like that, whether we are in North America, in US, they have their own, every state has their own privacy regulations and whatnot, right? Whether we have in Canada, where they have their own privacy requirements, data residency and data sovereignty requirements. No matter what the customers are from, we can design one control, one technical control, one policy control, which can be monitored through big data and AI to ensure that we are meeting all the key requirements. So one control, satisfy all, right? This minimizes the time invested. This minimizes basically
the resources that we need to deploy this. And with the, and I'm a big believer in automation. So if we deploy automation, and I say automation, right? So it's all about, like, as they say, like in real estate, it's all about location. In cybersecurity and privacy, I say automation. Because if we can automate it, we can monitor it effectively. The KPIs can be designed in a very effective manner, right? We can then be able to assess ourselves with respect to capability maturity model index, the CMMI, where we are standing. So ये जो तुम्हारी जो शुरू की चीजें मैंने बताई ना, this is where you are talking, they're listening. But you will set the stage and then let them talk. Okay? And then because they have listened a lot, बस उन्होंने बहुत सुन लिया. Our notes later, they will be taking notes. And from within your answer, they will then, take out more questions, which is something I'm going to give it to you right now, right? As I said, this is going to be a 4-part series. So we will go through different things, right? And I'm going to show you all the things that you have to make sure that you deliver, right? So just the first 2 paragraphs is where in your job description that you sent me at Google, this is where you have to set the stage. Because if you can set the stage, then the stage is set. Everyone knows, right? Everyone knows who Abdul Sami is. Everyone understands who Abdul Sami is and where he's coming from. Now they will be interested to know more, right? Because you have touched all the key aspects that they're already working on, right? So they're already working on all of these things. Some of these things are already starting to develop, right? Some of these things are very way behind because Google, how Google operates. They always do businesses from where they can generate the most revenue. But now they've realized that because of the emerging technologies, AWS is way far ahead, right? And in cloud, Google is still classified as a startup in the cloud business. They're not that big. Many services, but they want to go there. They have a bigger platform. They can go there. They have the resources to go there. But it all depends on resources. Is not all about money. It's all about talent as well, right? So they're developing this thing. Now it says, the 3rd paragraph of the job description, define and implement new detection techniques to prevent, mitigate abusive activities in security and privacy vulnerabilities for internal and external tools. See, I already explained to this within the introduction, how, you can do these things. To identify these things, mention to them, nowadays, it is all about embedding security within, the code of the application, right? Embedding, so for example, infrastructure as a code or application as a code, right? If we can embed security as a code within these things, and this is where I, highlighted 5 key pillars. I mean, there can be more pillars, but to me, these 5 pillars are very important. You can imagine Google or any organization in the middle, and then, we have blockchain technology that we can utilize. We have big data and data science, AI, because they all feed on each other, right? Then we have DevOps and DevSecOps. DevSecOps is very important because sooner or later, all these security engineers who are working at Google, down the line, will be required to become part of the DevSecOps culture. DevSecOps culture. And this is where, excuse me. This is my 2nd day with COVID-19. So this is, I just have a dry cough. This is the only symptom I have, and a light fever. So you have to mention these things and highlight the importance of, embedding security controls, define, implement new detection techniques. If they ask you, what are the new detection techniques you can mention. So मैं अब तुम्हें इसमें चीज शेयर करता हूँ. Let me share this. This is very important. Let me open this.
Yeah, new detection, they might be asking with for IPS IDS. That's not how to. This is above and beyond IPS IDS. Okay. So don't wear your traditional hat of IDS IPS. Hmm. No. IDS and IPS are older techniques. This is all about many things, and I'm going to explain to you. So you're studying public blockchain advancement track, right? G. G. In these tracks, there's on the Ghanima, you have these labs, Ghanima portal, right? So there are around, I would say, if I have to. So there are around 29 labs which are on the portal. So which has a series of labs. You need to memorize these labs. Every day, spend at least, I would say, repeat each and every lab, at least, I would say, minimum 3 times. Okay. Okay. Then you have these open VPN labs, right? There are more than 72 labs for open VPN. This covers any application in the world, Google application, Microsoft application, cloud applications, no matter what kind of applications there are. They all go through the same process, right? Now, these applications are the key applications. So if I look about, these are the ones that we have released so far, right? G. So there are more coming in. So WSTG, if I have to count them, there are more than 123 labs, right? So if you think about those things, so these are the labs that we've released, and we are releasing every week, 10 labs, 20 labs, something like that, right? So you can see you have to memorize these labs as well. This is Web Security Testing Guide, WSTG. At Google, every single thing is a web application. Every single thing is a web application. So understand, and I'm going to answer that question, define and implement new detection techniques. What are those new detection techniques? I'm going to explain that to you. We have these open VPN labs for network pen testing. Again, at Google, every single thing runs in a given network. So there are more than 40 labs. There is Mimikatz. Mimikatz has multiple labs in there. So this 40 are just the headings, but when you go in and you expand them, they become more than 100, 150, right? So these are just the topics, and each topic has multiple labs in there, right? So you have to go and understand these things. And then you have the blockchain labs, right? So the blockchain, there are more labs in the blockchain, but we have only given you these ones right now, right? Another remaining 10 will be coming by 15th. All of them will be completed, right? So the public blockchain, joining a blockchain mining pool, transaction analysis, API, key exposure, mnemonic phrase, all of those things. So essentially the track that you are learning right now has more than 150 to 200 labs, right? These labs are good enough. These labs are good enough for you to understand. Now, there is another advancement track, which is basically the offensive security advancement track, right? This is something that once you secure the job, then you can look into that. And this is where you can look into basically IoT firmware, blockchain, private blockchain, MITRE ATT&CK and stuff like MITRE ATT&CK. So you can see the new detection techniques are these ones. These are all the labs. So essentially, if someone asks you, how to perform these things, these are the 42 headings, which are very important. There are more than that, actually. And these things gives you all the key aspects. If I have to sum them up, a MITRE ATT&CK, there are more than 250 plus something, right? These labs are very important for you. I mean, they will come later on for offensive security advancement track. This is not for you right now, but later on, once you secure the job, you have to mention to them, in today's world, every security aspects for any application, if you're talking about, so you have to mention to them, if they ask you, how do you define and implement new detection techniques to prevent or mitigate abuse or abusive activity or security and privacy vulnerabilities? How do you do that in your existing job? So you mentioned to them
So there are two schools of thought. One is the old school of thought. The other one is the new school of thought, right? That's the new generation. The old generation, they emphasize on IDS, IPS, log analysis, and SIEM, security information event monitoring, file integrity event monitoring, file integrity monitoring, all of these kinds of things. IAM, identity access management, privilege access management, firewall management, all of these things, they play a role. Absolutely, yes. Right? However, that's the old school of thought. The new school of thought is basically where, security, all of these things that is being performed by the old school of thought is being managed and monitored through big data and AI automation. So all of these solutions, each of these solutions are spewing out a lot of data. That data comes into a central repository, SIEM, and this is where we can implement artificial intelligence and big data to create these different reports and triggers, which explains to us if there is any potential vulnerability coming up, where we are essentially embedding all the MITRE attacks, and this is where you then mention the MITRE attack framework. But essentially, what I'm proposing is we embed the MITRE attack framework, which is, in my view, covers pretty much all the key things, right? Let me see, give me 1 minute. Give me 1 minute. I just want to do a couple of things where you have to mention and you have to memorize these names, right? As if they're coming from your own self at a good pace. So this is going to be very, very important for you, right? So I can get this Excel sheet in the labs in Ganima website. Well, the MITRE attack framework, I will tell you something. Hold on. Okay. So altogether in the MITRE attack framework, we have around 222 controls, right? Mm-hmm. Each of these controls, each of these headings, and the headings, if I have to count the headings, they are around 14. So 14 categories, okay? And you can find this MITRE attack framework if you go online to any of these things. Let me see if I can go online. Hold on. If you search online, attack.mitre.org, this is very easy, right? Okay. So you can go to the tactics, the techniques, the matrices, and here you will be able to find all the key things, right? They have released the new MITRE attack as well, which is something that they keep on releasing. New techniques are coming in, technique changes are coming in. So there's a lot of things coming up, right? This is the holy, you can say the holy grail when it comes to, all kinds of attacks on enterprise networks, mobile applications, or industrial control systems, ICS. You can see ICS have a different way of being managed, right? Mm-hmm. So if you go online here, matrices, you can see these are all the techniques. These are all the techniques that you will see, right? So I can share this sheet with you. I can certainly share this sheet with you, but you have to mention, look, the new way of securing the applications is basically if we can embed, but then all the critical applications of Google or for a given customer, this is what we do, and this is what I recommend, is that we perform a continuous reconnaissance. We check the resource development capabilities. We check how the initial access is given to, to a user, how trusted relationship,
established between accounts. Then we check the execution, which is checking how the application is executing different kinds of accounts, or user execution, or infrastructure execution, Windows or Linux or whatnot. Then we check the persistence, the privilege escalation, the defense evasion, credential access, discovery, lateral movements, all these key aspects, collection, CNC, command and control, exfiltration, and impact. If we can manage all these different 14 categories, more or less, that I named, within the applications itself, through the stage gate process, where like the applications are prepared before they go out for the customer to be released, these are the new techniques through which we can secure the applications. And since there will be a lot of data coming in, we utilize big data and AI to get the work done. Because essentially, there are two schools of thoughts, right? Either we utilize the old school method, it's a summer of 69, it will be a summer of 69, right, for us. Use that joke and they will laugh. Okay? So essentially, it will be the summer of 69. We'll be living in the summer of 69, as Bryan Adams used to sing, right? But then, if you really want to be in today's day and age, we really need to make sure that we implement and infuse all the emerging technologies at our disposal, to really expedite and understand better and protect these applications in a much more robust manner. This is very important. I mean, whoever is sitting there, they will be taken by surprise. Because you are showing them the vision that they're already working on, right? And they will be surprised, okay, this guy, he knows this thing. So because they need people who are already in sync with them, but also challenges them as well, right? So there's a conventional wisdom, and then there is another wisdom that they're looking for, which is like, thinking outside the box, right? So you have to bring that perspective as well. Like Prophet Muhammad, peace be upon him, when he was doing, Ghazwa Khandaq, the battle of the trench. The Quraysh were bringing a big, huge army on cavalry, right? And the Quraysh were coming fully equipped. Abu Sufyan was coming in fully equipped with weapons and art, cavalry. I think it was like more than 1,000 horses and stuff like that. And you can't fight a cavalry because they will run into you with huge spears and they will take you out, right? So Rasulullah, Prophet Muhammad, peace be upon him, was very worried. Like, what should we do? He called in everyone. Everyone was giving them their own mashwara, conventional wisdom. They were saying, you know what? We do this, we do that. We fight in small groups and battles, because they didn't have any horses to fight cavalry. Because with cavalry, you need cavalry to fight, right? Because that's like jousting, like you run, both the horses run together. And jousting is like you have the spear and you take him out, right? Right. Had any of these things. So Salman Farsi, may Allah be pleased with him, one of the companions of Prophet Muhammad, he said, you know what? We dig a trench. So the other companions, they got angry. They said, like, the enemy is coming and this guy is telling us to dig a trench. What is he talking about? Is he out of his mind? Salman Farsi, radiallahu anhu, he said, horses, they run on ground. If you take out the ground from beneath their feet, they can't run, So that's why we will be able to stop the cavalry within their tracks and we'll be able to fight with them. So Prophet Muhammad, peace be upon him, said, I like, his advice, because his was thinking outside the box. Yeah. Right. So you have to mention that, the conventional wisdom is using SIEM, security information event monitoring, FIM, file integrity monitoring, web application firewall. We are doing internal vulnerability scans, external vulnerability scans. We're doing all of those things that we can. Privilege access management, identity access management, all these kinds of things. Yes, those are all good. We need them. Yes, absolutely yes. But if we can automate the whole process and embed these controls within the application as security as a code, this is where we will make a big difference, right?
bring that to their attention. Mhm. So anyone who's sitting there who's smart enough will say, yes, he's right. Okay. So this is like a high level interview preparation for you. The next is write detection rules to identify malicious attacks, activity within logs. Again, how do you write these detection rules, right? I'm going to mention to you many open source tools and techniques. Whatever SIEM you have used, like QRadar or whatever, like Splunk. Tripwire or Splunk or whatever the case is, we will talk about that next week, inshallah. But this is what you need to do now. Again, next Thursday we will meet again, because this is a big interview. There's a lot of things covered here. Analyze various logs, packets, Yes. techniques. I'm going to cover all of them through examples, where I will give you examples. How do you do this right now? And how do you propose to do it at Google, right? And mention to them all the key things, right? Mhm. So this is a big interview. You have to be fully prepared for all of these things. And now what I'm going to mention to you is go back and complete, all of these labs, So by next Friday, by next Thursday, if you can come to me and say, Faisal bhai, I completed all of these 150, 200 labs multiple times, I would say you will have the confidence, because then I will mention these tools and techniques and you will say, yes, I understand how to convey, how I do this, how I've done that, because there is detection rules in there. There is basically packet analysis, log analysis, all of those things are already covered there, right? So that's something that they're already doing. But one of the things I wanted to show you is that one of the things you have to understand is that within these things, we are within these different advancement tracks, right? So there's cyber defense advancement track, and then there's DFTH, right? All the new ones, right? So you can see these are the next generation, tracks that we have, which mentions many things, forensics and applied, and all these are all hands-on things, right? We will mention these things, the blue team, the OSINT, the red team, and the red teaming, and the PCI-DSS, and all these kinds of things, and then the offensive security elements as well, right? But again, using big data for threat hunting, a big data lab from Dr. Sarang Sheikh using IBM Azure, GCP, and AWS. This is something that we're using. We are using IBM AWS Data Lake, right? Especially right now. So you have to mention that. This is going to expedite your case, your process, because they are looking for people who understand the technology parts, who understand all the key things. And this interview is not going to be easy, because they'll be firing from all cylinders. You will have fire from different different directions, right? Because once you start talking, they will start taking notes, and then they will ask questions from within your own notes. Yes. Your answers. So this is recorded. Go back, listen to it, write it down, come back to me, inshallah, and say, I have this follow-up question. How do I answer this? How do I answer that? Or how do I answer this, right? And if you are able to do that, that will give you the next level of assurance to go further and be fully prepared, inshallah. Okay? Sure. Do you have any questions for me? For the labs, so I have blockchain, public blockchain advancement track, right? So I almost finished the Python primer, and I'm in the alpha right now. And I started the CISSP, the first domain. I completed almost that, and I will start the second domain, inshallah, soon. So beside that, I think you mentioned the Linux. So I'm okay with Linux. I'm intermediate in Linux. Because I have used. If you're asking me what do you have to finish, you have to finish SSP. Mm-hmm. You have to finish your CIS top 20 controls, because all those controls they're asking for is CIS top 20 controls. CI, okay. You have to finish your ISO 27001 lead implementer, lead auditor, right? You have to finish your SysOps, the Red Hat intensive, and then you have to finish all the key labs that I mentioned today, all 150 labs. So that 150 labs are in the blockchain advancement track? Yes. So because if you go back to on the website, let me show you. Okay. Blockchain advancement track,
essentially already has the CAD, so if I type in public, so there are two different kinds of tracks, public blockchain and private blockchain, right? Mhm. So CAD is part of each and every track that you are studying, right? So this is the public blockchain advancement track. So you have the CAD. CAD is already there, right? There's a new added course, web development, which is only given to those who are studying public blockchain. So web Okay. development is there, right? Then there is programming in Ethereum, programming decentralized apps, security in the blockchain, and application development, NFT tokens, tokenomics, and cryptos, right? This is where we will cover this part next in our interview, inshallah. Okay. But then you also have these labs, right? These are the labs that you have right now, which is phase 1 and phase 2, right? So replicate these labs, build up these labs, because they are going to ask you about that. So career advancement track is the foundation, is the bedrock of any track you want to go in, right? So that's the bedrock where you already have access to it. So study those courses. Now, regarding basically, let me show you something. Blockchain, Google network. Google is already developing a blockchain, network right now. They are basically in the process of developing something, and they will be using it extensively. Back in January 2024, in 2022, they have created a dedicated unit, blockchain and other next generation distributed computing and data storage technologies, right? So they have developed this thing. And this is essentially DevOps, SecOps, and blockchain guys working together, right? Because many companies are already doing that. Facebook, Twitter, Amazon, they already manage their own, networks. Amazon has the most developed network right now, which is the Amazon QLDB, the quantum ledger. This is something that we are covering in our private blockchain advancement track. So, which is something that we're releasing by the end of this month, right? Or maybe sooner. This is where we are teaching you how to develop applications and how to manage these applications on all of these things. You can see GCP doesn't have any network, but they are only providing infrastructure. IBM has a network, AWS has a network, and Azure has a network, right? So Amazon is leading the industry right now in terms of having their own private blockchain, a combination of public and private blockchain network. I'm going to recommend you to read some of this, right? How to develop these things. But Google is already developing something. They are left behind. They are very behind on this right now, right? But they are developing something right now. They are working towards it. Hopefully, in the next 6 months, you will find something from Google. But if you mentioned already that I'm already working on public blockchain and private blockchain and quantum ledgers and developing applications and testing out these applications, how secure they are, so on and so forth, that will give them a lot of credence and say, you know what, this resource is a good resource. We can move into other projects as well. Because what they do is you will be working as an internal resource for Google. Because this is a practice. You see, it's a growing team. Trust and safety, security and privacy team will be working on all the products, all the platforms. So this will give you some next generation skills, inshallah. But you have to understand that you have to follow through and understand the public blockchain advancement track, the DevOps advancement track. Both of them, they already have CAT, right? So you have public blockchain advancement track, consume it, and suck it in as much as you can. This will certainly prepare you for the interview. I have your resume now. If I work on your resume now, you can easily get into PwC at a much higher pace or higher rate, or Capgemini or any of those consulting companies want to go. Are you married? Yes. Working for these consulting companies require you to travel a lot. So just keep this in mind, right? But if you want to be stationary in one place, then Google is a great place to work in. You will, inshallah, have a much more great learning opportunities. Sure. Inshallah. So prepare yourself. We still have time. When is your first interview? So they told me
on May 18. I agreed on that, but as I want to do a preparation, so I said I need some more time. So they said that when you want to be. So I said June first week. So they said okay, that's fine. So we will do a confirmation and very soon. Okay, don't push it too much, right? Okay. Now commit to it right now, because June first week you have a lot of time. You have 25 days, and if you can spend time, just like Sayyid Badal, who invested 6 hours a day in reading, going through public blockchain advancement track, and he secured his job, right? Alhamdulillah, in Germany. He was also a student over there as well. So this program is now available in English as well. So I will be doing the same thing for anyone who can speak English. We will be preparing them for interviews as well, right? There are more than 1 million jobs alone in blockchain technologies in US, right, and Canada, right? If I combine US and Canada, 1.2 to 1.5 million jobs. If I add in cybersecurity on top, then the number becomes quite big, right? Right. So you're in the right spot, inshallah. Don't talk to them about, mention to them that you are working on some new exciting technologies, exciting things. Mention to them that you are part of a research R&D team, where you are investing your time in terms of learning new things and experimenting with new things, because they like to hear that, right? They don't prefer people, should not say like, it's a strong word. They prefer people who are learning new things, right? Who are experimenting with new technologies. If you mention that I'm just doing 9-to-5 job, then they will not be interested in you, right? You have to bring something different on the table. You say like, I'm part of the team, whereas there's a couple of alumni from Stanford and MIT, and they have developed this platform, and we are researching and testing out technologies and trying to break into them. And we are pretty much targeting all the cloud providers like Amazon, GCP, Azure, IBM, all the DigitalOcean, Oracle Financial, all the key providers, right? And my interest lies, cybersecurity is my core focus, and GRC. But then I also see the 5 key technology elements, which can provide a very secure method, or you can say a secure spectrum in terms of, I would say, protecting the confidentiality, integrity, and availability of the information, which is the most important thing to us, right? Data is the new oil, right? Google relies on data. Everyone knows that. Okay. It's no secret, right? How can we protect that data from being compromised? Data has some of the key traits like confidentiality, integrity, availability, non-repudiation. All of these elements are very important to any organization, especially to Google, right? So what excites me the most is, yes, I'm working in my current position with some exciting technologies, but then I'll be on the forefront of working within these areas. And what excites me a lot is basically, if given the opportunity to work at Google, is I want to take risks and come up with new solutions, right? But risks in a quantified manner, not risks like blanketly. No, risk cannot be eliminated. It can be mitigated, or it can be accepted, right? So I really want to understand all the key aspects, but then my role will be to utilize these emerging technologies, blockchain, and if he asks you, how can you employ blockchain in cybersecurity? We can utilize blockchain for identification and authentication of user and applications. That's a great use case, So no need for any passwords and stuff like that. We can create a completely passwordless system. So there's so many things we can do, right? So this is how you have to bring yourself up, right? So that they are fully engaged and fully engrossed within your interview. Inshallah. Okay? Inshallah.
Sorry, I'm not feeling well. Oh, no, it's okay. That's So you can appreciated. go do your preparation. Same time next Thursday, we will meet inshallah. Okay, inshallah. And one last question about the Ganima lab. So, so you said I need to do 150 labs. All like, is the step by step is there? Because I haven't seen that. Step by step. I'm Okay. going to connect you with Osama. Osama is the person who manages, everything on the Ghanima labs. He can walk you through the whole process Ji. and prepare you, inshallah, if you're stuck or anywhere like that. I will ask him to connect you, Sure. help you. Right? Let me give you his number as well. Sure. His name is Osama. He manages our Discord channel as well. This is his number. He's based in Saudi Arabia. So he will help you in all the things, inshallah. Inshallah. ठीक है. I will tell him कि भाई, you are going through an interview. जी. Okay, that's his name. Tell him that Faisal bhai, give me your number. Please help me understand the labs, how to access them, so that I don't waste my time, because I have my interview on Google and I just जी. want to make sure that I pass this interview on my first attempt, inshallah. ठीक है, inshallah. Jazakallah. There's another thing you have to do, which is very important. Look, working hard is the founding principle in जी. Islam, right? Second thing you have to do is you have to wake up for tahajjud. Pray, you're already praying 5 times a day. Wake up for tahajjud and ask Allah. Because if you can get into Google, right, they will pay you very well, but you will learn a lot. And even if you work there for a couple of years and then you leave, you can become a CISO or a CIO. Inshallah. Like, inshallah. Inshallah. Right? So Allah has given you a very good opportunity. Utilize it to the max and ask Allah to help you, inshallah. 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 Okay? Go and prepare yourself. Inshallah. Jazakallah. Thank you so much. Okay, I'm sitting here for the next 30 minutes. I can take some questions. Whoever has any questions, they can come forward. They can raise their hands. Now I will go in Urdu, right? I will speak in Urdu, but if anyone is there who wants to speak in English, they can raise their hands and they can ask the question as well, and I will be more than happy to answer them, inshallah. Okay? Okay, Arshad, go ahead. जी अरशद बोलिए. अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह. Speak a little bit louder. थोड़ा जोर से बोलो. मैं इंडिया से हूँ. मैं MBA कर रहा हूँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे लिए क्या बेहतर होगा. MBA कहाँ से कर रहे हो? मैं इंडिया बिहार से हूँ, मगध यूनिवर्सिटी. और MBA करने के बाद तुम्हें क्या क्या करना चाहते हो? सर ऐसा कुछ तो यहाँ प्लान है नहीं. मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया हूँ, मगर स्टडी यहाँ ऐसी होती भी नहीं है. कहीं भी नहीं होती. पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है. पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में एक ही हाल है. बांग्लादेश तो और भी निशानों पे बहुत बुरे हालात हैं. और एक क्वेश्चन और था सर, कि मैं ये पूछना चाहता था कि आप लोग जो पाकिस्तान से ये स्टडी करवाते हैं, तो इंडिया गवर्नमेंट बहुत नज़र रखती है, तो क्या मैं पढ़ाई करूँगा तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? ये पाकिस्तानी फर्म नहीं है, ये एक कैनेडियन कंपनी है. ठीक है. और मेरे पास बहुत सारे हिंदू पढ़ते हैं. ठीक है. सो मेरे बहुत सारे हिंदू स्टूडेंट्स यूएसए में बड़ी बड़ी जगहों पे काम करते हैं. नहीं, बात ऐसी कि मैं मुस्लिम हूँ, तो गवर्नमेंट ज्यादा नजर रखती है. मैं अगर आपका पैसा पे करूंगा तो मैं आपका डिटेल जाएगा. जो तुम पैसे पे करोगे वो कैनेडियन कंपनी में आएंगे. उसका नाम कैनेडियन कंपनी की रजिस्टर्ड कॉर्पोरेशन है. ऐसा सेट कि हम इंडिया में तमाम यूनिवर्सिटीज में जाके उनको बता रहे हैं. ठीक है. तुम्हारा मकसद क्या है? MBA करने के बाद तुम क्या करोगे? वहां पर काम करोगे, बाहर जाना है, क्या करना है? आप जैसा गाइडलाइन करें. मैं बीकॉम करने के बाद मैं MBA कर रहा हूँ. इंडिया में बीकॉम 3 साल का होता है ना? जी. देखो, खास हमारी स्टडी वैसी हुई नहीं है. वो कहीं नहीं होती. वो तुम IIT में चले जाओ. IIT में नाम है, बस वो पढ़ा के निकाल देते हैं. अच्छे से मुझे इंग्लिश भी बोलने नहीं आती है ना के देखो, इंग्लिश के लिए तुम्हारे पास कैट के अंदर
जो है 400 घंटे हैं। 400 घंटे का मतलब है कि तुम्हारे पास 400 आवर्स हैं, 500 आवर्स हैं, ठीक है। यानी कि वहां पर जो ट्रेनर बैठा हुआ है वो रोजाना, हर हफ्ते 5 क्लासेस, 10 क्लासेस होती हैं। एक ट्रेनर 5 क्लासेस लेता है, दूसरा ट्रेनर 5 क्लासेस लेता है। सो देयर आर 2 trainers and they're teaching English 1 hour a day, right? So 10 hours a week. If you study with them for 40 days, मतलब 40 weeks, अगर तुम 40 हफ्ते तक भी पढ़ते हो, that's 400 hours for you. This is where you can speak and communicate in English. The reason is that we want people to be able to effectively communicate in English, right? We are increasing that. हम उसको बढ़ा रहे हैं. We are increasing that to 3 classes a week, right? So there will be classes. So you can essentially say it will be 15 hours a week. So 40 से अगर आप multiply करोगे, then the number goes up, right? Significantly. हमारा मकसद ये है कि तुम सब लोगों को इस काबिल बना दें. Our intent is that you're able to work on the international platform. Now, if you study public blockchain advancement track, this will not only prepare you for blockchain के लिए ना सिर्फ तैयार करेगा, बल्कि मार्केटिंग के अंदर जो तुम पढ़ रहे हो, उस मार्केटिंग को पढ़ते हुए तुमने कहाँ किधर किस तरह इंडिया में काम करना है. इंडिया जो है ब्लॉकचेन के जरिए मिलियंस कमा रहा है. लेट मी चेक blockchain economy in India, right? India is huge. India is right now ramping up its blockchain, और blockchain पे वो बहुत काम कर रहे हैं. They are trying to do that. The reason is they want to expand their economy, which is good. Let them do that, right? So the government-related blockchain projects are estimated to drive up to of GDP, 0.1 यानी कि billion GDP, ramping up to 5.1 billion in 2032. गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि तुम लोग के जो आईडी कार्ड्स हैं, पासपोर्ट्स हैं, कोई भी गवर्नमेंट आईडी कार्ड्स हैं, ड्राइवर्स लाइसेंस हैं, उन सब की ऑथेंटिकेशन के लिए वो लोग ब्लॉकचेन को इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? और इंडिया में ये बहुत बड़ा हो जाएगा, बिकॉज इंडिया के पास ना बहुत बड़ी इकोनॉमी है, पासपोर्ट्स, आईडीज, ये सब चीजें, ताकि वो अपने फिजिकल बॉर्डर्स को सिक्योर कर सके, राइट? और इंटरनली सारी चीजें गवर्न हो सके प्रॉपर्ली. सो दे आर डूइंग दैट. सो अगर तुम ये पब्लिक, ये मार्केटिंग का एमबीए कर रहे हो, कितनी फीस है एमबीए की? हमारे यहाँ तो 2 लाख है सालाना. जी. सालाना तुम 2 लाख देते हो, और कितने साल का एमबीए? 2 साल का. 2 साल. तो तुम 4 लाख दोगे इसकी, ठीक है ना? सेमेस्टर. हाँ, ठीक है. तो तुम 4 लाख इसकी पूरी डिग्री की फीस दोगे. जब तुम डिग्री करके जाओगे तो तुम्हें कोई 35,000 की नौकरी भी नहीं देगा. सही कह रहा? जी बिल्कुल. ठीक है ना? लेकिन तुम सोचना, ये तुम अकेले नहीं हो. पाकिस्तान में भी यही हाल है, बांग्लादेश में इससे भी बुरा हाल है, ठीक है? पाकिस्तान में तो 200 यूनिवर्सिटीज हैं, 220 मिलियन की पॉपुलेशन है. इंडिया में 900,000 यूनिवर्सिटीज हैं, 1 बिलियन की पॉपुलेशन, राइट? डबल है. पाकिस्तान में उनकी आबादी के हिसाब से उन्होंने 10% रखा हुआ है, ठीक है ना? और उनकी जो यूनिवर्सिटीज हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रेजुएट निकलता है. लेकिन एक मजे की बात है, लेट मी शो यू समथिंग. अगर तुम ये पढ़ते हो और तुम ये पढ़ के जाते हो, तो तुम इंडिया के किसी भी एरिया में, wherever you are within India, you can work, right? So ये जो कंपनी है, this company is formed by British and Canadian and American alumni. It doesn't say Pakistani. Does it say anywhere Pakistanis? No, right? So that's the first thing you have to understand, okay? The second thing is that what you're learning is you'll be able to work within all the key vectors. So बेशक तुमने MBA किया है, ठीक है, मार्केटिंग में या फाइनेंस में, whatever the cases, उसके अंदर इन तमाम की जो एप्लीकेशंस हैं, यूज केसेस हैं, उसमें तुम काम कर सकोगे, राइट? That's the other thing you have to understand. अगर तुमने वो नहीं पढ़ा तो ये 85 मिलियन जॉब्स जो दुनिया में मिट रही हैं उनमें से, और जो 97 नहीं पैदा हो रही है, तो तुम उसमें पढ़ने के बाद तुम इसमें आ सकोगे, पब्लिक ब्लॉकचेन एडवांसमेंट ट्रैक पढ़ने के बाद, ठीक है? ये सारी चीजें हैं जिसमें तुम काम कर सकते हो. ये सारे एरियाज हैं जिसमें गवर्नमेंट के अंदर इतना पैसा लग रहा है, तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें उन्होंने ज्यादा पैसा लगाया, राइट? ज्यादा पैसा लगा के वो कर रहे हैं. अच्छा, अगर तुम्हें बाहर निकलना है तो हमारा कॉलेज बाहर भी खुल रहा है,
ठीक है, you should be able to go there as well. और इंडिया में जो स्टूडेंट वीजा का जो सक्सेस रेट है वो 91% है, as you can see. This is from the Home Office if you're going to UK, right? पाकिस्तानियों के लिए 96 है, इंडिया नाइजीरियंस के लिए 95 है, चाइनीज के लिए ऑलमोस्ट 100% है, राइट? सो यू कैन इमेजिन कि इंडिया में पिछले साल 2021 में 1 लाख से ऊपर बच्चा गया है बाहर पढ़ने के लिए, राइट? तो ये चीजें तो मैं थोड़ी सी जरा अपने जहन में रखनी है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. नाउ इंडिया के अंदर एक और चीज है कि ब्लॉकचेन को इसलिए वो लोग यूज कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर गवर्नेंस को करना सबसे मुश्किल काम है. चीजों को गवर्न करना ना, कि भाई चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, गवर्न नहीं हो पा रही, ठीक है? तो इंडिया के अंदर अगर तुम अपनी स्टार्टअप बनाते हो, कुछ करते हो, यू कैन डू दैट, ठीक है ना? यू कैन एब्सोल्युटली डू दैट. नाउ उसमें तुम्हारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं. इंडिया के अंदर ये चीज बहुत तेजी से जा रही है. और वेब 3.0 की जो इनोवेशन है, जिसमें डिजिटल एसेट्स हैं, कंपनीज जो अंदर काम कर रही हैं, इंडिया का जो जीडीपी होगा वो 1.1 ट्रिलियन पे चला जाएगा इन द नेक्स्ट 2 से 3 साल में. बिकॉज B2B, G2C गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G, और B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज जो है ना, B2B कहते हैं ना, बिजनेस टू बिजनेस, G2C कहते हैं गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी इंटर डिपार्टमेंट्स के अंदर. ये तमाम फंक्शनैलिटीज के अंदर वो ना बहुत तेजी के साथ इन टेक्नोलॉजीज को लेकर आ रहे हैं. तो अगर तुमने पढ़ा तो तुम ना सिर्फ अपनी कंपनी बना सकोगे, बल्कि तुम उसमें अच्छी तरह काम भी कर सकोगे. कौन से कोर्स के लिए तुम्हें रजिस्टर होना चाहिए? उस कोर्स के लिए तुम यहाँ पे जाओ, annafe.com लिखो, ठीक है जी. यहाँ पर जाओ, पब्लिक ब्लॉकचेन एडवांसमेंट ट्रैक पे रजिस्टर हो. दिस इज द ट्रैक फॉर यू टू फॉलो. इसको फॉलो करो, ठीक है? ये तुम्हें बिल्कुल तैयार कर देगा. अभी तुम्हारी डिग्री के कितने साल रहते हैं? ये 2022 में लास्ट एंड में खत्म हो जाएगा. अभी से पढ़ो, 6 महीने के अंदर पूरा कंज्यूम करो, जितना तेजी से कम कंज्यूम कर सकते हो. महीने की फीस होगी तुम्हें महीने का एक्सेस मिलेगा, ठीक है? साल की फीस होगी तुम्हें सारा एक्सेस दे दिया जाएगा. जाके जल्दी सारा कंज्यूम करो, तुम 3 महीने बाद यहाँ से बाहर भी जाके काम कर सकते हो. तुम इंडिया का कितना लगेगा फी? इंडिया में फीस कितनी होगी ये तो मुझे नहीं, तुम जाके तुम्हें देखना नहीं, आपके साइड पे पढ़ने का. सॉरी, मतलब अन्नाफे पे मैं कोर्स करूंगा तो उसका क्या फी लगेगा इंडिया का? कितना टाइम लगेगा, क्या फी होगी? फी तुम्हें यूएस डॉलर में पे करनी होगी. अगर तुम यूएस डॉलर में पे नहीं कर सकते तो तुम वहां पर एक वेस्टर्न यूनियन की सर्विस है जिसमें तुम अपनी लोकल उसमें पे कर सकते हो. कितनी है? $2,000 है, क्या है? जाके इसको चेक कर लो. एक और चीज मैं तुमको बताता चलूं कि यहाँ हमारी वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ तुम्हारे पास ना एक ऑप्शन है एफिलिएट का. एफिलिएट प्रोग्राम में जाके चले जाओ, अपनी यूनिवर्सिटी में सबको बोलो यार पढ़ाई करो, वो करो, जो भी जाके रजिस्टर होगा तुम्हारे नाम से तुम्हें 8% पैसे मिलेंगे उसके, तुम अपनी फीस निकाल सकते हो, ठीक है? ये हमारे पास तरीकेकार है. अगर तुम बिल्कुल भी फीस अदा नहीं कर सकते तो तुम इस प्रोग्राम के लिए जा सकते हो annafe.com/qrd, ठीक है? इसके अंदर तुम जाने से तुम बोलो कि भाई मैं अदा नहीं कर सकता, बोलेंगे ठीक है हम आपको 1 महीने का एक्सेस देते हैं, अगले महीने से आप ना एफिलिएट प्रोग्राम में रजिस्टर हो, अपने नाम से अपने बच्चों को रजिस्टर करवाएं, जो रजिस्टर होगा उसमें आपको उसके पैसे दिए जाएंगे, राइट? तो ये तुम चीज करके अपने पैसे निकाल सकते हो, जो भी तुम्हें पैसे निकालने हैं, जिससे सभी काम करना है इंशाल्लाह, ठीक है? अच्छा सर, मैं स्पेशलाइजेशन अभी नहीं लिया, तो मैं फाइनेंस लूं कि आईटी लूं? इंफॉर्मेशन आईटी लो या फाइनेंस लो, इट डजंट मैटर. तुम ब्लॉकचेन में कर रहोगे, दोनों के अंदर ब्लॉकचेन का काम हो रहा है, तुम उसमें काम कर सकोगे जी. अब इसमें हम स्टडी जो होगी आईटी ऑडिट भी पढ़ाई जाएगी? आईटी ऑडिट पढ़ा रहे हो, ओके. सारा एक साथ कोर्स चलेगा? तुम्हारे पास मल्टीपल एरियाज में काम करने का तरीका तुम्हारे पास होगा, तुम उसकी फिक्र नहीं करो. आई मीन यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड, ओके इंशाल्लाह, ठीक है जी. नेक्स्ट बताइए, ये क्या नाम है? आईपैड आपका नाम, व्हाटएवर द नेम इज. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम जी. सर मेरा नाम हाफिज मोहम्मद खानुल्लाह है. मैं एक्चुअली ऑलरेडी एनरोल कर चुका हूँ बीइंग ऑफ माय एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं दुबई इलेक्ट्रिसिटी में काम करता हूँ एज अ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल टेक्नीशियन. एक्चुअली
मैं फॉलो तो काफी अरसे से कर रहा हूँ अल-नाफे को, बट मेरा थोड़ा ये है कि मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है और मैं प्रॉपरली अपने आप को लेके चल नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने एनरोल किया हुआ है अपना आईसीएस एंड स्काडा का जो ट्रैक है ना उसके लिए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के अंदर स्काडा यूज होता है और साइबर सिक्योरिटी का भी है। तो मैं तो डिप्लोमा है मेरा इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल के अंदर, मेरे पास डिग्री नहीं है। सो एक तो ये है कि ऑलरेडी मेरी डिस्कशन भी हुई थी डॉक्टर साहब से, डॉक्टर जिशान उस्मानी साहब से, इंशाल्लाह परसों फिर भी होगी। तो उन्होंने मुझे कुछ वेबसाइट भी बताई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो मुझे मतलब ड्यूरिंग द कॉल वो मैं कॉपी नहीं कर पाया, तो मिस हो गया, तो इसीलिए कल दोबारा फिर से होगा। तो एक तो मुझे ये बता दीजिए सर कि हमारा ग्रुप डिस्कशन वगैरह कुछ होती है, ताकि मैं किसी के साथ हेल्प लेके अपना इसको कंटिन्यू कर सकूं। और बिकॉज मैं इंडिविजुअली तो पढ़ता तो हूँ, बट इंडिविजुअली मेरे से वो सही तरीके से उसको मैं लेके चल नहीं पा रहा हूँ। देखो भाई, तुम्हें किसी से कोई कंसल्टेशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम इतने पैसे Okay. लगा रहे हो, किसी को पैसे कितने दे रहे हो, कभी किसी को क्या पैसे दे रहे हो। यहाँ लाइव पूरी कम्युनिटी बनी हुई है, वो तुम्हारी हेल्प करेगी। तुम अगर इंस्ट्रूमेंटेशन में काम कर रहे हो दुबई इलेक्ट्रिक के अंदर, तो तुम उनके स्केडर डिपार्टमेंट में आईसीएस पे काम कर सकते हो, ठीक है। जी जी उसके जी। लिए तुम अच्छे, तुम्हें पैसे भी मिल सकते हैं। उसके लिए तुम यहाँ पर काम करते हुए सब चीजें करके अंदर जा भी सकते हो। तुम अगर पब्लिक ब्लॉकचेन एडवांसमेंट ट्रैक और कैट पढ़ते हो, तो स्काडा के अंदर तो बहुत ज्यादा काम हो रहा है ब्लॉकचेन का, ठीक है ना। आईसीएस के अंदर मुख्तलिफ चीजों में काम हो रहा है। और किस तरीके से वो लोग ना यूनिट्स को बेचते हैं, लॉक इन करते हैं, प्राइसिंग सेट करते हैं, वो सब की सब जो है ना इलेक्ट्रिकल ग्रिड के अंदर ब्लॉकचेन के जरिए हो रहा है। तुम उसको भी कर सकते हो। जहां तक तुम्हारा रहा सवाल कि भाई मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, वो सब आंसर्स मिले हुए हैं। और एक पूरी कम्युनिटी बनी हुई है दुबई में। तुम्हें इतने सारे लोग मिल जाएंगे जो हमारे कोर्सेज पढ़ रहे हैं, तुम जाओ उनके साथ जुड़ जाओ, बोले यार हम मिलके पढ़ के पढ़ते हैं। बस तुम्हें क्या जरूरत है किसी को पैसे इतने देने की। वो जो जिन साहब का तुमने नाम लिया, तुमको कितने पैसे देते हो मशवरा करने के? 5000 फॉर 15 मिनट्स, लास्ट टाइम दिए थे 2500, अभी तो उन्होंने बढ़ा दी है। तो नहीं तो इसमें तुम्हें क्या फायदा होगा? वो मतलब मैं तुम्हें यहाँ पर मैं वक्त अपना निकाल के बैठता हूँ, यहाँ पर सबको बताता हूँ, जाओ बैठ के पढ़ो। उसमें तुम्हें वो 5000 जितने हैं वो तुम्हारी आधी फीस है पूरे महीने की, शिव राइट। सर एक्चुअली ऐसा है ना कि मैंने बहुत ट्राई किया है कि मुझे जो मेरा ग्रुप है ना, लाइक मैंने जो जिसमें एनरोल किया हुआ है आईसीएस एंड स्काडा का जो ट्रैक है, मुझे उस ग्रुप के कुछ लोग मिल जाएं तो ये होगा कि मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा। आईसीएस तो मैं आईसीएस स्काडा का कोई जो ट्रैक है ना, वो जो तुमने वहां से लिया था स्काडा जो स्काडा एडवांसमेंट ट्रैक, तो वो है नहीं। वो तो सिर्फ स्काडा का ट्रैक है खाली। उसमें जी जी। तुम्हें कोई चीजें नहीं है, तुम्हारे लिए कोई लैब्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम्हें आके एक एडवांसमेंट ट्रैक में रजिस्टर होना पड़ेगा। जब तुम ओके वहां रजिस्टर होगे तो वहां पर जो लड़के पढ़ रहे हैं, जो लाइव क्लासेस में बैठते हैं, लाइव ग्रुप में बैठते हैं, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। क्योंकि ये सारे लड़के एक एक दो दो तीन तीन महीने, 3-4 महीने पढ़ के लड़के ना बड़ी बड़ी कंपनीज में आके जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके सर। मैंने जो ओके डिप्लोमा किया हुआ है, इसी तरह का पाकिस्तान में एक लड़का बंदा था, मोहम्मद कलीम उसका नाम है। उसने भी जी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया हुआ है इलेक्ट्रिकल के अंदर। पहले जी कहीं जी। मैकेनिक था, कभी कहाँ था। अब उसकी माशाल्लाह 6 फिगर सैलरी में पाकिस्तान में जॉब हो गई, बड़ी जबरदस्त किस्म की, माशाल्लाह। ठीक है। तो तुम तो जी दुबई में बैठे हुए हो, तुम्हारे दुबई में ज्यादा तुम्हारा अच्छा खासा वो है। तुम जाके वहां बैठ के अपनी प्रिपरेशन करो, जाके पब्लिक ब्लॉकचेन एडवांसमेंट ट्रैक में रजिस्टर हो, सारी चीजें तरीके से पढ़ो। वहां जाके अपना जी उसको पढ़ाओ कि भाई साथ बैठ के पढ़ते हैं, कौन है जो रजिस्टर हुआ है। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। मैं यहाँ हर हफ्ते, रोजाना हफ्ते में 5 दिन बैठा होता हूँ लाइव सवाल के लिए। यहाँ के पूछो ठीक। सवाल, मैं जवाब दूंगा उसका। अगर तुम्हें ओके ऐसी सर। ट्राई करने हैं तो जाके जाया करो भाई, मेरा कोई मसला नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं सर, इसीलिए सर मैं पिछले काफी अरसे से ट्राई कर रहा था कि एटलीस्ट मैं आपके सेशन में ज्वाइन कर सकूं। तो मुझे सर वो आप बता दें जो ट्रैक आप बता रहे हैं, मैं उसको एनरोल सबर कर। कीजिएगा। किसी को भी सवाल करना है तो stream.anafe.com पे आ जाइए, ब्राउज रूम में जाइए और जी ज्वाइन में जाइए। अगर वो रजिस्टर हैं, यहाँ पर आ जाएं, यहाँ आके सवाल पूछ लें, मैं सवाल के पढ़ के जवाब यहाँ पर सबको दूंगा, ठीक है। आपको जी कौन से ट्रैक के लिए रजिस्टर होना है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जाओ जी। भाई, पैसे बचाओ अपने यार, मतलब कि तुम्हारे पैसे वो काम आएंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। अगर तुम्हें पैसे जाया करने शौक है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। नहीं नहीं सर, क्यों नाफे आया डॉट क्यों कॉम पे करेंगे। जाओ, जी जी सर। कैरियर ट्रैक्स में जाके पब्लिक ब्लॉकचेन एडवांसमेंट ट्रैक में जाके रजिस्टर हो, ठीक है ना। ब्लॉकचेन के अंदर, ब्लॉकचेन जो है विद जी इन जी। स्काडा, इतना काम हो रहा है मैं तुम्हें बता नहीं सकता, ठीक है ना। अगर मैं उसको दिखाऊं तुमको कि क्या क्या यूज केसेस पे किस तरह से काम हो रहा है, यू विल बी शॉक्ड कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है।
ब्लॉकचेन के अंदर जो उनका जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है। अगर तुमने इस पे काम किया तो तुम बहुत अच्छे तरीके से अपनी इसी कंपनी में, तुम्हारी जी सर। एग्जिस्टिंग जॉब है उसी के ऊपर ही तुम लग के बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हो। जी दुबई जो है ना, सर। दुबई क्योंकि चल ही रहा है पूरा ब्लॉकचेन के ऊपर, तुम्हें मालूम है? जी जी जी, एक्चुअली सर हमारा देवा का साथ ही हमारा एक नया जो डिपार्टमेंट खोला है उन्होंने आईटी का, मोरो के नाम से, जो पूरे हमारी दुबई स्पेशली जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी आईटी और साइबर सिक्योरिटी को वही डील कर रहे हैं। तो स्काडा भी हमारा है एक्चुअली, जो हम अपना जो क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारा यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। हाँ हाँ। तो एक्चुअली वो सर मसला ये है कि मैंने एज ए टेक्नीशियन ज्वाइन किया था, तो आपको पता है गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है आगे। देखो मैं तुम्हें काम की चीज दिखाता हूँ। ये यस सर। डीटीएस सोल्यूशन के नाम से दुबई में कंपनी है, इनके पास जी जॉब आई है, लीड ओटी साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। ये तुम ना पब्लिक ब्लॉकचेन एडवांसमेंट ट्रैक पढ़ के उसके अंदर कैट पढ़ के तुम इसके लिए तैयारी अप्लाई करके जा सकते हो अप्लाई करने के लिए, ठीक है? यहाँ इनके पास नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर सीनियर इंटरमीडिएट इसमें जा सकते हो, हॉकाई Yes. साइबर सिक्योरिटी मैनेजर, हॉकाई सॉफ्टवेयर इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी वो एक ट्रैक पढ़ के तुम इन तमाम जी। चीजों को अप्लाई कर सकते हो। ये एक ही कंपनी है जिसके अंदर इतनी जॉब्स हैं, सारी फुल टाइम जॉब्स हैं जो आएंगी। इसके अंदर जॉब में वो जो मांग रहे हैं आपसे, कह रहे हैं 5+ ईयर्स आईटी ओटी एक्सपीरियंस, जो तुम ऑलरेडी तुम्हारे पास ओटी का एक्सपीरियंस है, ठीक है, लेकिन ओटी एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी वो हमारा बन जाएगा। वो कह रहे हैं कि भाई एक्सपीरियंस इन ओटी साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड्स, लोकल एंड रीजनल, नीसा, ये हम पढ़ा रहे हैं, हमने करवाया है इसको, ठीक है? ये किया Okay, तुमने, यानी कि तुम जाके इसके लिए जाकर अप्लाई करके ये सब चीजें हमने पढ़ाई हैं, तुम जाके इंटरव्यू तो दो, बोलो भाई नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स हो गई, आईडीएस आईपीएस की सब चीजें हो गई, इन सब पे मैं काम करके आपको सब चीजें कर आकर दे सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, ठीक है ना? और ये Yes. इवन की सारी जो चीजें हैं हनीवेल की, सीमेंस की, सबकी, ये भी हमने राना ओवैस के कोर्स के अंदर सब चीजें करवाई हैं तुम लोगों को। तो तुम हाँ जी तुम जी लोग को जी। सिर्फ बैठ के पढ़ना है खाली। ओके अगर तुम सर। 3 से 6 महीने पढ़ लिए अच्छी तरीके से, 3 से 4-5 घंटे एवरी डे 4 to 5 hours, you can easily secure the job in Middle East, इंशाल्लाह, ठीक है? जी सर। अब्दुल रज़ाक आप बोलिए, अबू जर सादिक बोलिए। मैं आफ्टर 10 minutes I have to walk away, so if anyone who has any questions please go to stream and ask there. किसी के मैं 10 अस्सलाम मिनट वालेकुम। में आऊंगा, जिसको सवाल करना है वो प्लीज स्ट्रीम में आके सवाल करे, स्ट्रीम की वेबसाइट पे। जी वालेकुम सलाम, बोलिए। फैसल भाई मेरा क्वेश्चन है, मैंने असल में कैट के कोर्स के लिए एनरोल कर लिया था, मेरी आपसे रिसेंटली बात हुई थी इसके लेके ना, तो आपने मुझे कैट के कोर्स का बताया था। उसके बाद मैंने ये भी पूछा था कि ब्लॉकचेन, आपने कहा था कि ये कैट से फिर आप दोबारा वो कर सकते हैं उसी में। तो मैंने आपसे 2-3 चीजों का ना मुझे इशू आ रहा है। एक, मुझे आइल्स की क्लासेस का ना पता ही नहीं चल रहा, मतलब मैंने ईद से पहले भी डिस्कस किया था, मेरे पास एक नंबर है लड़के का, तो वो एहसन नाम है। देखो अगेन तुम लोग जो ना, सबसे बड़ा मसला ये है तुम लोगों के साथ, एक तो मैंने इनको बोला भी है, देखो यहाँ जाओ annafe.com, मैंने इनसे बोला है, ये हमारी इसमें कमी कोताही है, ठीक है ना? ये लाइव क्लासेस स्केड्यूल नजर आ रहा है वेबसाइट के नीचे, बिल्कुल बॉटम में आओगे ना लिंक आएगा, ठीक है? ये मैंने बोला है, ये ईद की वजह से इन्होंने डाला नहीं, ये हमारी गलती है, इसमें माजरत है। यहाँ पर क्लिक करोगे, लाइव क्लासेस कब हो रही हैं आइल्स की, सब लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना? काजिम की लाइव क्लास कब हो रही है, और राना मोहम्मद उवैस की कब होती है जो गोल्ड पैकेज के स्टूडेंट्स के लिए हैं, मैं कब बैठता हूँ, डॉक्टर यासर कब बैठते हैं, इब्राहिम फारूकी आइल्स, और उस्मान खालिद, अब्दुल खालिद। उस्मान खालिद जो है किस टाइम पे क्लास लेता है, क्या करता है, इब्राहिम फारूकी किस टाइम पे लेता है, पोर्टल के अंदर ही जाके तुम्हें इनकी क्लास मिलेगी, दोनों की टाइमिंग अलग अलग है, ठीक है ना? ठीक है ना? 9 बजे पीएसटी का मतलब है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, ईएसटी का मतलब होता है ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। मैंने दोनों का लिखवाया था ताकि सबको पता हो कि कौन सा किस में आएगा। इसकी 9 से 10 होती है, इसकी 10 से 11 होती है, ठीक है? सैटरडे संडे को 9 से 10 करता है क्लास, की सब लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ जाओ, बिल्कुल वेबसाइट को खोलो और सबसे नीचे आ जाओ, क्विक लिंक्स में ये सारे क्विक लिंक्स है ना, मैंने बोला कि पोर्टल में सब जगह डाल दिए जाए ताकि सबको पता हो कि कौन सा लिंक कहाँ है। इवन कि जब तुम्हें अपना इंटर्नशिप के लिए जब तुम ये अप्लाई करोगे कि तुम्हें अपना सीवी बनवाना है, तो उसका भी लिंक ये रहा, ठीक है ना? रजिस्ट्रेशन, एफिलिएट प्रोग्राम के लिए रजिस्टर होना है, उसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, एफिलिएट रजिस्ट्रेशन यहाँ पर, ठीक है ना? ये रहा एफिलिएट रजिस्ट्रेशन, ठीक है? हर चीज उन्होंने दी हुई है यहाँ पर, जस्ट फॉलो दीज लिंक्स
यूनिवर्सिटी का हमारा क्या अपडेट है, कितने दिन रह गए हैं, क्या रह गया है, सब चीजें तुम्हें यहाँ नजर आएंगी। ठीक है, ऑलमोस्ट 293 डेज रह गए इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये सब चीजें तुम्हें यहाँ नजर आएंगी। फॉलो द लिंक्स, दिस विल हेल्प यू। फैसल भाई एक दूसरा मैंने पूछना था लिंक्डइन के बारे में, मतलब जो है ये कोर्स है या इसकी भी लाइव क्लासेस हैं, इसी तरह मुझे क्विक लिंक में मिलेंगे? उनकी मतलब क्लास होती रिज्यूम। है हफ्ते में, अच्छा। हर 2 हफ्ते के बाद वो लाइव बैठते हैं, उसको अनाउंस कर दिया जाता है किस टाइम पे क्या है। हर 2 हफ्ते के बाद मेरे साथ लाइव बैठते हैं, और हर हफ्ते 2 हफ्ते में, यानी कि महीने में 2 दफा वो अपनी क्लास करते हैं, और 2 दफा मेरे साथ लाइव बैठते हैं इंग्लिश में। इस थर्सडे को नहीं, नेक्स्ट थर्सडे को मेरे साथ लाइव दोबारा होंगे वो। उसमें मैं इंग्लिश में ही बात करता हूँ, उसके ऊपर उनके साथ टॉक होती है, लेकिन वो अपनी टॉक में बैठते हैं लाइव क्लास में। उनकी अलग क्लास है, उनका एक अलग स्केड्यूल है। अगर आप जाके उसको फॉलो करोगे, यू विल बी एबल टू नो कि क्या है किस तरह से। ठीक है, दैट विल हेल्प यू इंशाल्लाह। एक वो चीज पूछनी थी फैसल भाई, मैंने असल में जब पेमेंट की थी ना इसमें कैट के लिए, तो मेरा मंथली मैंने फर्स्ट पेमेंट की थी, तो उस वो मेरी ना सेशन जो है बार बार एक्सपायर हो रहा है। तो मैंने इसके लिए फोन भी किया था, उन्होंने जो ऊपर नंबर दिया था वो शायद कराची के कोई भाई थे, तो उन्होंने फिर मैंने उन्हें पर्सनली अकाउंट के अंदर, मतलब वो जो अलनाफे का स्पोर्ट के अंदर जो अकाउंट है उसके अंदर मैंने शेयर कर दिए थे पैसे, तो उसके बाद मुझे मिल गई। लेकिन वो अभी तक मेरा सेशन एक्सपायर ही आ रहा है, मैंने जैसे आगे आगे पेमेंट्स करनी है तो फिर वही तरीका है, मतलब व्हाट डू यू मेरे मीन वो सेशन एक्सपायर? क्या मतलब, किस चीज का सेशन एक्सपायर? वो असल में मैं पेमेंट जब मैंने करनी होती है ना आपने, तो वो उसमें 3 कैटेगरीज आती है, क्रेडिट कार्ड की या आपने इजी पैसा करना है जो भी। तो क्रेडिट कार्ड वगैरह मैंने उस टाइम ना, वो टाइम लिमिट आती है 10 मिनट की, उसके अंदर मैंने नहीं की थी, तो सेशन एक्सपायर्ड हो जाता है। तो उन्होंने कहा था आप कंट्रोल शिफ्ट तुमने खुद उसका करो। जवाब दे दिया कि अगर 10 मिनट में नहीं करूंगा तो सेशन एक्सपायर हो जाएगा, तो तुम्हारे लिए जी खोल के जी। तो नहीं? हाँ लेकिन वो एक्सपायर्ड हो गया ना, तो फिर मैंने बंद किया, मैंने दोबारा कंट्रोल शिफ्ट करके मतलब दोबारा एंट्री की सारा ईमेल और पासवर्ड डाल के, लेकिन वो हमेशा अब ये एक 10 मिनट का भी टाइम नहीं दे रहा। मैं ओपन करता हूँ मेरा सेशन एक्सपायर्ड होता है, मतलब मुझे 1 सेकंड का टाइम भी नहीं दे रहा कि मैं पेमेंट कर सकूँ। मैंने इशू मुझे उन्हें कहा था कि कॉल कर। ये ना इजी पैसा के तरफ से बड़े मसले आते हैं। हमने अपनी ई पे की अपनी कंपनी खोल ली है, हमें उसको भी हम लोग 2 हफ्ते में लाइव कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो उसमें तुम्हें मसला नहीं होगा, उसमें तुम वाउचर कहीं पर भी जाके पे कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो, किसी भी बैंक में जाके पे कर सकते हो, वो चीज़ तुम्हें मिलेगी। इजी पैसा में एक बड़ा मसला है, इजी पैसा का मतलब कि करोड़ों अरबों रुपए वो रोज का ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ना उनकी अपनी सर्विस 9 में से 10 में से 9 दफा बैठी हुई होती है। ये एक बड़ा मसला है। इसलिए हमने अपनी पेमेंट कंपनी स्टेट बैंक से रजिस्टर करा के सब कुछ बना के खुलवाई, राइट। उसका मकसद यही था कि ये मसले ना हो, क्योंकि हम बहुत परेशान हो गए थे पाकिस्तान में पेमेंट प्रोसेस करने से। इंडिया का तो मसला बड़ा अच्छा हो गया कि वेस्टर्न यूनियन की तरफ से हमारा जीपीएस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, तो उसमें हमें कोई मसला ही नहीं होता, वो तो कोई भी जाके पे कर देता है। ठीक है, तुम मुझे इसकी वीडियो बना के दो और अपनी आईडी बताओ कि आईडी है मेरी इस तरह से है, और मैं तुम्हें अपना नंबर दे रहा हूँ, उसमें तुम मुझे ना ये स्क्रीन रिकॉर्ड करके मुझे रेप्लिकेट करके दिखाओ यार। आई वुड लाइक टू सी दैट, ताकि मैं फिर उनसे बोलूँ कि इजी पैसे के साथ ना ये खोलें टिकट और देखें कि इजी पैसे का क्या मसला है। इजी पैसे के साथ बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं। ठीक है, 2 हफ्ते के बाद ठीक है। तुम्हें मसला नहीं होगा, तो तुम हमारी अनाफे ई पे में जो है ना ऑनलाइन ट्रांसफर या वाउचर पेमेंट से किसी भी बैंक में जाके जनरेट करके जाके पे कर सकते हो, और वो भी ब्लॉकचेन वेरीफाइड होगा। तो तुम पेमेंट कर लोगे, तो हम लोगों ने अमेजोन का जो है ना क्वांटम लेजर इम्प्लीमेंट किया है। पाकिस्तान की पहली कंपनी है जो कि अमेजोन का क्वांटम लेजर इम्प्लीमेंट करके हम लोग अपनी पेमेंट प्रोसेसिंग का डेटा सिक्योर कर रहे हैं, राइट, इंशाल्लाह। तो वो तुम्हें जी चीजें नजर आएंगी, और उससे तुम्हारी पेमेंट जब वेरीफाइड हो जाएगी तो कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता, और वो पेमेंट के बाद तुम जाके चेक भी कर सकते हो। ठीक है, इंशाल्लाह। बस एक और चीज पूछनी थी मैंने सीए के बारे में। फैसल भाई मैं कोर्स ले तो रहा हूँ, लेकिन इसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं बस उसे देख ही रहा हूँ, मतलब मुझे जिस तरह की फील आ रही है ना कि हैंड ऑन एक्सपीरियंस वाली, मतलब मुझे लग रहा है कि लर्निंग नहीं हो रही मेरी, मतलब मैं सिर्फ वीडियोस देखी जा रहा हूँ और नेक्स्ट। तुमने लैब्स की? नहीं नहीं अभी लैब्स नहीं की मैं, मतलब जब पहुंचा ही लैब्स नहीं की वहां। तो तुम उससे क्या बात कर रहे हो? तुम लोग लैब्स की नहीं तो तैयारी करके इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तुम कह रहे हो कि मैं भी वीडियोस ही देख रहा हूँ। भाई जाहिर सी बात है, यही फर्क है ना। वो जो दुबई वाला लड़का था, क्या नाम था, अरशद, वो कह रहा है कि मैंने स्टार्ट, मैंने कहा भाई जाके जब तुम पब्लिक एडवांसमेंट ट्रैक लोगे ना, उसमें तुम्हें लैब्स मिलेंगी। उसमें तुम जाके जब लैब्स करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि सिस्टम्स में काम कैसे होता है। ये वही लैब्स हैं जो बच्चे करके माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सिस्को में जॉब्स पकड़ रहे हैं। ये वही लैब्स है जिसको तुम करके
अपने मुल्क में, अपने मुल्क से बाहर जॉब्स पकड़ सकते हो। ये वही लैब्स हैं जो तुम्हें सारा वो काम सिखा देती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है। लेकिन इससे पहले कि तुम लैब्स करो, पहले अपनी तुम तैयारी तो करो। जब तुम्हें बात ही करना नहीं आती, कुछ करना ही नहीं आता, जैसे तुमने नूरानी कहा था पढ़ा नहीं, ठीक है, नूरुल बयान पढ़ा नहीं, और तुमने कहा मैं जाके कुरान पढ़ना शुरू करूं, तुम्हें नहीं समझ आया, पढ़ा ही नहीं जाएगा। ठीक है, पहले अपने आप को दुरुस्त करो पहले। जब तक तुम्हारी वो चीज नहीं होगी, फिर तुम कैसे आगे, जब लैब्स करोगे फिर तुम्हें तुम्हारा होश ठिकाने आएंगे कि अच्छा ये काम ऐसा होता है। ये है डिफरेंस, समझे भाई? ठीक। तो जाओ पहले तैयारी करो, उसके बाद बात करो। अब मैं स्ट्रीम के ऊपर पढ़ रहा हूँ। एनीवन हु हैज एनी क्वेश्चंस प्लीज स्ट्रीम पे जाके टाइप कर लें, मैं स्ट्रीम पे पढ़ के उसके जवाब दूंगा। ऊपर सबसे पहले जवाब दिया है कि कर्ज सना पे हैं बिलाल। आई पेड अफोर्डेबल फी फॉर 3rd month 4 days ago बट स्टिल डिडंट गेट एक्सेस। आई एम इन कांटेक्ट विद मिस्टर फराज। मिस्टर फराज से बात करें, आपको एक्सेस मिल जाएगा। ईद की वजह से ये सब आगे पीछे हुए थे। दे आर ऑल बैक इनटू द ऑफिस, दे शुड बी एबल टू हेल्प यू आउट बिलाल। इसके बाद कह रहे हैं डेटा साइंस का जो कोर्स है, आज भी मैंने पूछा उनसे, उसकी एडिटिंग वगैरह करके ये लोग रिलीज करने वाले हैं। व्हेन यू विल नो, जब वो हो जाएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना? Assalamu alaikum sir, please tell me highest paying jobs in Pakistan because most students can't be able to go out of country. Highest paying jobs पाकिस्तान में जो है, रीशान अली जो आपने लिखा है वो आपको डेवऑप्स के अंदर मिलेंगी, ब्लॉकचेन के अंदर मिलेंगी। इसके अंदर हाईएस्ट पेइंग जॉब्स हैं पाकिस्तान के अंदर, डेवऑप्स के अंदर, बिग डेटा के अंदर, इनके अंदर सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब्स हैं। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको सब चीजें करके फिर जाना होगा। आई नीड टू मास्टर लिनक्स, डू आई नीड कैट और सेपरेट सिसऑप्स? आई हैव टू वर्क इन पाकिस्तान। फाइब्रो कह रहे हैं कि उनको पाकिस्तान में काम करना है। अगर पाकिस्तान में काम करना है, कैट पढ़ोगे, लैब्स पे हैंड्स ऑन करोगे तो फिर जाके काम कर सकोगे, अदरवाइज तुम्हें कोई काम पे नहीं रखेगा। ओके, जिसको भी सवाल करना है प्लीज यहाँ इस वेबसाइट पे आके सवाल पूछ लें। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, आई विल बी एबल टू आंसर देयर क्वेश्चंस प्लीज देयर एंड देन। मैं यहाँ पर, ये लाइव चल रहा है, मैं यहाँ पर उनका पढ़ के जवाब दे सकता हूँ। ओके, मैं 1-2 सवाल वहां से ले लेता हूँ प्लीज, बाकी सब लोग वहां आ जाएं क्योंकि मुझे उठना है। आई ओनली हैव, मैं अब एक क्वेश्चन ले सकूंगा खाली, मुझे फिर इसके बाद जाना है। जी, इसके बाद शाजेब वकार बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। फैसल भाई, मुझे उसका थीसिस के हवाले से सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन करना था कि जो मैंने आपको थीसिस का डॉक्यूमेंट भेजा था वो, तो उसमें ये है कि फैसल भाई जैसे मैंने CISSP कंप्लीट कर लिया और आपके लाइव विद मोहम्मद फैसल और ISO 27001 की जो इम्प्लीमेंटेशन वाला कोर्स है वो भी आधा कोर्स मैंने कर लिया। तो उस पर ये कि अब काफ़ी ज़्यादा मैं टाइम दे रहा हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी जॉब उससे हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं जस्ट डिग्री की कंप्लीशन के लिए चाह रहा हूँ, अगर मैं थीसिस अभी उठा लेता हूँ तो वो कंप्लीट हो जाएगी। तो सिर्फ इस बारे में आपसे मशवरा करना था, अदरवाइज मैं इसको 1 साल डिले भी कर सकता हूँ थीसिस को अपने। अगर तुम डिले करोगे तो तुम जॉब कैसे करोगे आप? लेकिन तुम्हारा स्टेटस क्या है? यस, मेरा स्टूडेंट स्टेटस ये है। अब उसमें कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। जैसे सैयद बत्तल है, उसकी भी अभी आधी डिग्री हुई है, तो वो बता रहे थे कि ना उन्होंने जर्मन लैंग्वेज का पूछा ना थीसिस का पूछा। लेकिन कुछ इधर जो पुराने लोग हैं, सीनियर हैं, तो वो ये कहते हैं कि अगर आपकी कंप्लीट हुई भी हो डिग्री तो वो ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो ये कंपनी टू कंपनी मैटर करती है बात। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो आते हैं स्टडी वीजे पे और उनकी जॉब लग जाती है तो वो स्टडी छोड़ देते हैं अपनी। तो मेरा कोर्स वर्क कंप्लीट है अब, तो अगर सिर्फ मैं इन टॉपिक पे थीसिस करूँ तो वो ये है कि बस मेरा कोर्स वर्क मुकम्मल हो जाए, डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। देखो, ये तुम्हारे पास एक बड़ा टेक्निकल डिसीजन है जो तुम्हें लेना है। तुमने ये देखना है कि भाई अगर तुम अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो तुम जॉब पे बैठ जाओगे। जब जॉब पे बैठ जाओगे तो जो कोर्स वर्क है, टॉपिक ऐसा लो कि तुम्हें मजा भी आए, अगर तुम्हें कोई मिल जाता है, ठीक है, वो तुम्हारा ज्यादा बेहतर होगा, तो वो तुम्हें ज्यादा आगे लेके जाएगा। अगर तुम पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर कोई एप्लीकेशन डिजाइन कर लो, उस पर काम कर लो, या द रोल ऑफ ब्लॉकचेन इन साइबर सिक्योरिटी के ऊपर कुछ लिख लो। ये जो मॉडल बेस्ड टूल्स, सपोर्ट फॉर स्केचिंग एंड इंटरेक्शन डिजाइन, integrated use of state charts and task models in the context of model based design of user interfaces, ये इसका कोई फायदा नहीं है। ये तुम्हारी मिसाल, ठीक है ना, इसका कोई फायदा नहीं है। वो पाकिस्तान में तुम्हें ऐसे बहुत सारे, किसी आदमी का आया था कि ये दुनिया में वो आदमी है जो सबसे ज्यादा कोट होता है, जिसकी सबसे ज्यादा
साइटेशंस हैं, रेफरेंसेस हैं, उसका तुम अगर काम पढ़ोगे वो किसी काम का नहीं है भाई। इसी तरह की बिल्कुल चीजें, है। ठीक है, उसका ये तो कोई, यार, ठीक है, देखो उसकी कोई ऐसी रियल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है कि तुम मतलब क्या ना, वो ये सारे कागजी टाइगर हैं, तुम्हें कागजों में बड़े बड़े टाइगर मिलेंगे, पीएचडी भी मिलेंगे, ठीक है, लेकिन उनको काम कुछ नहीं आता। तो मुझे नहीं मालूम कि तुम इस पे क्या करोगे। ये टूल सपोर्ट फॉर कंडक्टिंग डिजिटल प्रोब स्टडीज, मतलब कि क्या मतलब कि ना, तुम्हें कोई इसमें फायदा सीखने के लिए तो कुछ भी नहीं है, इसका सीखने के लिए कुछ भी नहीं है फैसल भाई। देखो, टॉपिक तुम ऐसे करो कि जब तुम कहीं जाओ रेसिटेशन करके ना, तो जब तुमसे वो बात करें तो वो एंगेज हो, बोले यार तुमने बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। और वो टॉपिक अगर ऐसा हो कि वो इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, तो तुम्हें फौरन से काम भी मिल जाएगा, ठीक है। मेरा मशवरा तुम्हारे लिए होगा कि तुम जाओ पब्लिक ब्लॉकचेन को पढ़ो, जिस तरह सैयद बतल ने पढ़ा, जॉब पे भी लग गया, उसको क्लाउड के साथ पढ़ो, इन्फ्यूज करो, तो तुम भी सैयद बतल की तरह काम पे जाके लगे होगे। सीवी बनवाओ अपना मुझसे, जाके सबमिट ठीक है। करवाओ, उस लिंक के जरिए जाओ, वहां से सबमिट करवाओ। मैं तुम्हें देख के ठीक है। बताऊंगा कि किस तरह से कहाँ कैसे तुम्हारा सीवी बनेगा, और उसके बाद फिर तुम बात करो। और मेरा मशवरा है कि अगर तुम ना ऐसा ऐसा सुपरवाइजर ढूंढो कि जिसको बोलो कि भाई मैं ये यूज केस लेकर आ रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, द रोल ऑफ ब्लॉकचेन इन सिक्योरिंग, करो बाहर हो गई, जी जी। म्यूट, अपनी आवाज म्यूट कर लो। तुम लिखो द रोल ऑफ ब्लॉकचेन इन साइबर सिक्योरिटी इन सिक्योरिंग इलेक्ट्रिकल कार्स, ठीक है ना, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखो द हाई स्पीड रेलवे, और या लिखो द हाई स्पीड ट्रैक ऑफ ब्लॉकचेन एंड इलेक्ट्रिक कार्स, राइट। इस तरह कोई अच्छे से टॉपिक का नाम लिखो, और फिर तुम उसमें एक पूरा वो बनाओ कि किस तरीके से हम लोग ना गाड़ियों को सिक्योर कर सकते हैं ब्लॉकचेन के जरिए, उनकी उनकी सिक्योरिटी को, तमाम चीज़ों को, कि उनसे कोई आके ना कनेक्ट ना हो सके, वो सिर्फ वही कनेक्ट हो सके जो कि ऑलरेडी ऑथराइज और पब्लिकली ब्लॉकचेन से या प्राइवेटली ब्लॉकचेन से वेरीफाइड है। अगर इस तरह का टॉपिक होगा ना शाहजेब, तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो है ना, जिस तरह BMW में इकराम जर्मनी में काम कर, सब लोग जो लड़के करने में, सैयद बतल भी लग गया है, तो वो सारे के सारे इसी में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तुम्हारा जबरदस्त टॉपिक होगा जिसमें तुम ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। ये मेरा तुम्हारे लिए मशवरा है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, मैंने बस इसका इसीलिए कहा था कि बस ये जस्ट डिग्री कंप्लीट करने के लिए था, अदरवाइज इस टॉपिक का कोई फायदा नहीं, मुझे था अंदाजा इस बात का। तो मैंने यही कहा कि जस्ट आपसे एक मशवरा करूँ। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये नाफे के कोर्सेज अब काफी कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, तो उसको थीसिस को मैं डिले कर सकता हूँ अभी, उसका ऑप्शन है मेरे पास। मेरा मशवरा होगा, देखो तुम सैयद बदल से पहले आए थे, ऐसा ही है, सैयद बदल से पहले आए थे ना तुम, शाहजेब, तुमसे पूछ रहा हूँ। जी फैसल भाई, मैं उससे पहले आया। तुमसे पहले आए थे, तुम्हारी जॉब नहीं हुई, वो तुमसे बाद में आया, उसकी जॉब भी होगी। ऐसा ही। दोनों में क्या फर्क है? तुम मुझसे हमेशा डांट खाते हो, तुम बैठ के पढ़ाई नहीं करते, उसने पढ़ाई की, उसने बात सुनी, वो जाके जॉब पे बैठ गया, कॉन्ट्रैक्ट जी साइन भी कर लिया उसने, अब वो आराम कर रहा है, शादी की तैयारी कर रहा है, और उस बच्चा भी हो जाएगा उसका, और तुम बोलोगे कि यार अभी फसल भाई जो है अल्लाह ना, ना करे ऐसा ना हो, मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ। नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम बोलोगे फसल भाई आप मेरी भी दुआ करें, बच्चा हो जाए मेरा, मैं बोलूंगा भाई दुआ करता हूँ। फिर 3 दफा के बाद तुमसे पूछूंगा कि भाई शादी हुई कि नहीं, कह रहे नहीं शादी नहीं हुई, फिर मैं यही बोलूंगा कि चाहो यार पहले शादी तो करो। तो कहने का मकसद ये कि भाई पहले तुम जाके ना अपनी पढ़ाई करके जॉब पकड़ो, ताकि जल्दी जल्दी ताकि तुम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट कर सको, एंड देन यू विल बी मच मोर सिक्योर। दिस इज माय रिकमेंडेशन टू यू, ठीक है। ज़ईद यहाँ सवाल पूछ रहे हैं, have you canceled your NMAP course as it was previously scheduled because you are no longer teaching NMAP from the basics in Ghanima Labs? हमने ऑलरेडी NMAP को गनीमा लैब्स के अंदर उसकी तमाम चीजें कवर कर दी, सारी चीजें, एवरी सिंगल थिंग जो है उसकी वो कवर हो चुकी है। मुझे समझ नहीं आया कि आपने यहाँ तो 150 लैब्स की नहीं है, तो मैं इसका कुछ कर नहीं सकता, वो हर चीज उसने कवर कर दी है उसमें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सवाल है, इजी पैसा जो है 50,000 रुपीज जो है ना पेमेंट आप सबमिट कर सकते हैं इजी पैसा के साथ, लिमिट है। इजी पैसा से लोग मुख्तलिफ, ये आपकी अपनी लिमिट सेट हुई होगी 50,000 की, इजी पैसा की लिमिट नहीं होती, इजी पैसे से लोग पैसे भिजवा देते। आप अब हमारी सपोर्ट को फोन करके उनसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं, जैसे मुनीब अशरफ जो है, मुनीब अशरफ, मेरा आपके लिए आंसर ये है कि आप यहाँ जाइए वेबसाइट पे, ठीक है, अन्नाफे
इसका नाम है annafe.com/support। आप जब इस पे जाएंगे तो ये नंबर है, यहाँ पर आप सपोर्ट पे जाइए, टिकट खोलिए और आप कस्टमर में बात कीजिए हमजा जमाल हैदर से या एहसन से या यहाँ जो भी बैठा हुआ है, ठीक है। आप उनसे बात करें और आप उनसे बोलें कि भाई मुझे बात करनी है और ना मुझे पेमेंट करनी है, वो आपकी हेल्प कर देंगे, आपकी पेमेंट लैंड करवाने में, सब कुछ करवाने में आपके वो वहाँ पर असिस्टेंस कर सकते हैं। ये इनका नंबर भी दिया हुआ है, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एज वेल एंड दे विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। ओके, इसके बाद सवाल है मुनीब अशरफ जो है, मुनीब अब्दुल बासित, तुम इधर बैठे हुए हो? अब्दुल बासित, यहाँ पर अब्दुल बासित है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। अब्दुल बासित, तो मुनीब अशरफ से बात करके ना उनकी असिस्टेंस कर लो, उनकी पेमेंट। जी सर, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, वहां पर जाके लॉग इन करके उनसे बात करो कि आप मुझसे बात कर लें। अब्दुल बासित जो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनका नंबर भी पब्लिश करवा दूंगा वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, जिनसे आप लोग बात करके पेमेंट वगैरह को लैंड करवा सकते हैं पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में। ओके सर, वेयर इज टेम्पलेट फिलिंग वीडियो इन ISO 27001 27000 लुकमान जो वीडियोस हैं सारी की सारी वहाँ रखी हुई। I'm installing tools manual, it's I'm consuming my laptop is slow. लुकमान जो लुकमान 123 जो आपका सवाल है, इसका जो क्लाउड है हमारा कैज़म का, वो सिर्फ और सिर्फ एनुअल वालों के लिए अवेलेबल होगा और बाकी सब लोगों को जो है वो 6th month में मिलेगा, 6th month में, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू, 5th या 6th month में आपको जाके मिलेगा और वो भी आपको मंथ टू मंथ का मिलेगा। एनुअल वाला जो होगा, जो एनुअल पेमेंट करके आएगा, उसको पूरा क्लाउड का एक्सेस दे दिया जाएगा और उसको 3 घंटे रोजाना वो इस्तेमाल कर सकता है और पहले दिन से इस्तेमाल कर सकता है। और जो मंथली पर आएगा या क्वार्टरली पे आएगा या 6 मंथली पे आएगा, तो वो 6ठे महीने से इसको इस्तेमाल करेगा, राइट। ठीक है, सो वो आने वाला है, जस्ट वेट फॉर इट। हमारा काम नहीं है, क्या नाम है, आदिल अशफाक, हर चीज इंसान नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये अगर तुम लोगों को करनी है तो तुम लोग कर सकते हो, ERP या जो भी है। हमारा काम इतना सारा, हर इंसान सारे काम नहीं कर सकता। एनुअल स्टूडेंट लुकमान आपको फिर मिल जाएगा, ठीक है ना। मुबीन आजम कैट इन उर्दू और इंग्लिश, जो उर्दू में लेते हैं उनको उर्दू में मिलेगा, जो इंग्लिश में लेते हैं उनको इंग्लिश में मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस में लें। आदिल अशफाक कह रहे हैं कि आदिल अशफाक का सवाल बड़ा अजीब सा है, ठीक है। मैं इसमें क्या जवाब दूंगा आपको, मतलब कि 9 साल से वो IT के इंडस्ट्री में है और अगर वो काम नहीं कर पा रहे तो देयर इज नथिंग आई कैन डू। जी फैजान बोलिए, मैं 1-2 सवाल लूंगा एंड देन आई हैव टू गो। जी बोलिए फैजान। बोलिए फैजान, आपकी आवाज नहीं आ रही। सकलैन आप बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी बोलिए। अच्छा फैसल भाई, मैं आई गॉट एनरोल्ड इन कैट प्रोग्राम, करियर एनहांसमेंट। इसमें मुझे 1 महीना हुआ है इसको एनरोल किए हुए और मैंने स्टार्ट किया था फ्रॉम CISSP। तो उसको मैंने कुछ हद तक तो कवर कर लिया है, लेकिन अभी मैं देखा था कि कुछ अर्से में आपके सेशंस नहीं ले रहा था जो आप लाइव आते हैं। तो आई जस्ट फाउंड आउट कि वी हैव लॉन्च्ड द पब्लिक ब्लॉकचेन थिंग। तो मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि क्या मैं इसको पहले पूरा करूं कैट को जो मैं कर रहा हूं और इसमें मैं बाद में इसको कंसीडर करूं, या इट इज समथिंग दैट गोज हैंड इन हैंड, मतलब मुझे इसको साथ में करना चाहिए? डिपेंडिंग के तुम्हारे फाइनेंशियल हालात कैसे हैं। अगर तुम्हारे फाइनेंशियल हालात अच्छे हैं और तुम उसमें अफोर्ड कर सकते हो तो फिर पब्लिक ब्लॉकचेन पढ़ो। लेकिन अगर तुम्हारे फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं है, ठीक है,
तो तुम जो तुम्हारे पास चीज है पहले तुम उसको खत्म करो। अगर तुम्हारा पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम 1-1.5 घंटा कैड को लगा रहे हो तो 1 घंटा ब्लॉकचेन पे लगा के तुम जल्दी लग सकते हो। ब्लॉकचेन एक ऐसी चीज है कि उसमें जॉब्स बहुत ज्यादा है और बड़ी हाई पेड जॉब्स हैं, ठीक है। इनोवेशन बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा काम हो रहा है। अभी हम लोग पाकिस्तान का पहला क्वांटम लेजर लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, हमारी पेमेंट कंपनी जो होगी। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर किस्म का डेटा आप हमारे क्वांटम लेजर में सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने पूरा कोलैबोरेशन अमेजोन के साथ करके इसको बनाया है। तो इसमें आप कोई भी डेटा सेव करना चाहें, सिक्योर करना चाहें, आप कर सकते हैं और आप उसको फिर वेरीफाई कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। ये प्राइवेट ब्लॉकचेन का नेटवर्क है। पब्लिक ब्लॉकचेन भी है, इथेरियम का, मुख्तलिफ दूसरे भी आपको मिलेंगे, उनके हाइपरलेजर्स हैं, ठीक है। IBM ने अपना अलग बनाया हुआ है। इनोवेशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो अगर तो तुम्हें इनोवेट करना है और कोई काम करना है, देन यू शुड फोकस ऑन गेटिंग दैट इनटू दैट, डिपेंडिंग कि तुम क्या वो करना चाहते हो ना, और पैसे तुम्हारे पास कितने। अगर पैसे हैं तो अफोर्ड कर सकते हो तो बिस्मिल्लाह करो, बिल्कुल जाओ, अल्लाह का नाम लेके जाओ, उसको में कूद पड़ो। दैट इज द कोर फोकस। अच्छा फैसल भाई, मेरी आपसे पहले बात हुई थी तो आई शेयर्ड अ फ्यू थिंग्स अबाउट माई सेल्फ आपसे पहले जब मैंने बात की थी। मैं काफ़ी नॉन टेक्निकल बंदा हूँ। इवन मैं एक एक्सेल शीट देखता हूँ ना, तो मैं उसको ना पहले मुझे थोड़ा सा अपने आप को समझाना पड़ता है। देयर इज नथिंग रॉकेट साइंस इन देयर, आई कैन डील विद इट। तो नंबर्स देख के ना मुझे कुछ होता है, तो मैं अपना जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ के नीचे देखते हैं ना, तो इंसान का दिल बैठता है एक दफा। तो दैट्स व्हाट हैपेंस विद मी व्हेन आई लुक एट द नंबर्स या कोई ऐसी। तो मैं बहुत नॉन टेक्निकल बंदा हूँ। तो आपने मुझे कहा था कि ये गवर्नेंस रिस्क कंप्लायंस इस किस्म की फील्ड में आप आगे जा सकते हैं। तो स्टिल ब्लॉकचेन इज अ थिंग फॉर मी, आप समझते ब्लॉकचेन हैं। जो है, ब्लॉकचेन बहुत वाइड है। ब्लॉकचेन में डेवलपर्स हैं, ब्लॉकचेन के स्टोरी टेलर्स हैं, ब्लॉकचेन का GRC का काम है, ब्लॉकचेन के अंदर आर्किटेक्ट्स हैं। ब्लॉकचेन एक बहुत वास्ट फील्ड है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन में जैसे तुम्हें डेटाबेस के बंदे हैं, तो एक तुम्हें रिपोर्टिंग का मिलेगा जो सिर्फ रिपोर्ट्स निकाल के काम करता है, सुबह शाम रिपोर्टें निकाल रहा होता है। एक होता है जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक होता है जो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक होता है जो डेटा वेयर हाउस को मैनेज करता है, ठीक है ना। इसी तरीके से ब्लॉकचेन के अंदर मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। एक है बहुत टेक्निकल लोग जो एप्लीकेशंस बना रहे हैं, एक है टेक्निकल लोग जो एप्लीकेशंस को हैक करने में लगे में से, ठीक है। एक है जो उसकी सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस पे काम करते हैं कि पॉलिसी कैसी है, क्या बनाना है, क्या करना है, कितने ऑडिट्स हुए हैं, ऑडिट में क्या फाइंडिंग्स थी, हमने उसको परसू किया, बंद किया, फाइंडिंग्स को खत्म किया। तो तुम GRC में काम कर सकते हो। अगर तुम घबराते हो चीजों से, टेक्निकल चीजों से, तो तुम GRC इज द वन फॉर यू, ठीक है। GRC में फिर बातें होती हैं तुम्हें, यानी कि इट्स लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। GRC इज लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कितना तुम्हें प्रोजेक्ट मिला और तुमने काम कर लिया। इतना सीख लो ब्लॉकचेन कि तुम्हें अगर उनके प्रोजेक्ट्स भी रन करने हो तो तुम जाके रन कर सको, ठीक है। ये चीज है। तो दैट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस कि बोलो हाँ मुझे ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट आती है, मुझे NFT और ये टोकनॉमिक्स और डैप्स और Web 3.0 की एप्लीकेशन सब पे काम आता है, बट मेरा जो काम है वो उनको इनके सिक्योरिटी एंड GRC के ऊपर काम करना है। दैट इज वेयर आई वांट टू बी इन। व्हेन इट इज डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड, यस आई कैन डेवलप दीज एप्लीकेशंस, बट मैं उस पे काम करना है तो बहुत अच्छा है, फिर तुम उसमें जाके काम कर सकते हो। सो डिपेंड्स कि तुमने अपनी स्ट्रॉन्ग सुइट कहाँ ढूंढना है, क्या करना है, ठीक है। ये चीज ठीक, थैंक जी यू। सना खान बोलिए। वालेकुम सलाम, सना खान बोलिए, बोलिए बहन। अस्सलाम वालेकुम सर मैंने ये कहना था कि मतलब वो जब लिंक्डइन का वो लेते हैं ना सर लाइव सेशन, तो तभी सर उस्मान की क्लास मींस लाइव हो रही होती है और मींस तो वो नहीं लिया जाता है, एट सेम टाइम में हो रहा है। और दूसरी बात सर इब्राहिम की क्लासेस हो ही नहीं रही, वो लिंक ज्वाइन करो तो बस वही आता रहता है वेटिंग फॉर द होस्ट। तो मींस उनकी क्लास कोई भी ना रमजान। ऐसा कैसे हो सकता है कि क्लास नहीं हो रही? क्योंकि उनकी जो क्लास होती है, उनकी जो रोजाना जो रिपोर्ट्स आती हैं वो जीशान अख्तर के पास आती हैं। जीशान अख्तर मुझे रिपोर्ट करते हैं उनकी रोजाना क्लासेस हो रही हैं जो उनका टाइम है। अगर उनकी क्लास रोजाना नहीं होगी तो उनको हम रमजान में जस्ट उनकी रमजान में जस्ट एक क्लास हुई थी, वो भी 5 बजे। रमजान का मुझे नहीं मालूम। देखिए रमजान में हमारी कंपनी में मैंने सबको बहुत डांटा है कि ये सारे जो मुसलमान हैं सब रमजान के मुसलमान बन जाते हैं, सब काम छोड़ देते हैं और रमजान में सब इबादत में लग जाएंगे, सब काम छोड़ देंगे, दुनिया के सारे काम छोड़ देंगे। मैंने बोला भाई तुम लोग 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाहें ले रहे हो, तुम लोग क्या काम कर रहे हो?
मैं देखिए ये किस तरह का काम है? नहीं रमजान है, मैं दुनिया में कौन सी जगह सारे जो गज़वात थे, गज़वा बदर, गज़वा रमजान में हुए, ठीक है ना? और जितने बड़े-बड़े गज़वात हैं, गज़वा बदर तो रमजान में हुआ था, बड़े-बड़े वाक़यात रमजान में हुए, बड़े-बड़े मार्के रमजान में हुए। मैंने कहा पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो? तो वो जाके जंगें लड़ रहे हैं, तुम लोग रमजान में सब काम छोड़-छाड़ के मस्जिद में बैठ जाते हो। तो मैं बहुत सारे स्टाफ से नाराज़ था रमजान में, लेकिन वही है कि बस तो एक माहौल बना हुआ है। असल में वो इंडिया पाकिस्तान एक था ना जब, तो बहुत सारी हिंदुओं की चीज़ें अनफॉर्चुनेटली आ गई हमारे अंदर, ठीक है? तो ये उनका काम है, इसका सहाबा से कोई ताल्लुक नहीं है। आज आपने मुझे बताया है, मैं उनसे पूछता हूँ कि उनकी क्लासेस रमज़ान में कितनी हुई हैं, क्या हुआ है? और अगर वो क्लास ले ही नहीं रहे थे तो हमने स्टडी किस बात की नहीं? ऐसा हो नहीं सकता, वो क्लासेस लेते हैं। अगर आपको लॉगिन करना मैंने नहीं आ अब्दुल रहा, बासित नहीं आ रहा, दैट इज़ अ मैंने डिफरेंट। भाई अब्दुल बासित को बताया था, मैंने अब्दुल बासित भाई को मीन्स स्क्रीनशॉट भी सेंड की कि मीन्स अगेन क्लास नहीं हो रही। देखें, अगेन क्लासेस सबकी हो रही हैं, जो मुझे दिशान अख्तर जो उसके एकेडमी के एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने बताया है, मैं उनसे दोबारा पूछ भी लेता हूँ। आप कल शाम को इसी टाइम पे बैठूंगा पाकिस्तान के 9 बजे, आप आए सवाल करें, मैं आपको जवाब दूंगा कि आपने जो मुझे बताया था और उनकी रमजान में ये क्लासेस हुई थी, इस टाइम पे हुई थी। आप अगर नहीं बैठी, आपने अगर लॉग इन नहीं किया या आप गलत जगह जा रही थी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है? ये चीज़ है, ठीक है ना? तो इसके लिए तो आपको जाके देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पर किधर कैसे जा रहे हैं, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ और उनसे पूछ के बता भी देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए इंशाल्लाह, ठीक है? चलें, जज़ाकल्लाह खैर, सब लोग का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर हम मुलाकात करेंगे। इसका जो शुरू का जो हिस्सा है, क्या नाम है तुम्हारा, यूसुफ, प्लीज इसको कट करके जो है ना प्रेजेंट कर देना फॉर इंग्लिश ऑडियंस, और इसको तमाम जबानों में डब करके जो है ना आगे उनके सोशल मीडिया के पेजेस पे डाल देना, ठीक है? इंशाल्लाह यूसुफ, तुमसे फिर क्लास में मैं उस अभी मीटिंग में मुलाकात करता हूँ। सबको बोलना कि इंशाल्लाह 10 मिनट में हम लोग मीटिंग स्टार्ट करें, ठीक है? आप सब लोगों से जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।